कर ले मैं कर लिया तो नीचे डिग गई जो बनाया किन्ने दा बाई कीता ही लाइक मैं कितना सीगा सिर्फ वो कहने कि फ्लिप कर ला $2 दे कि कोई कैन कोई आउट हो गई ते मैं जो इन कीता तो उस तो बाद फिर वो कोई नहीं कोई गल नहीं किन्ने दा बाई कीता ही मेरा सीगा 87 187 287 287 मार्केट गई थी 299 4:10 पे वो भी आई है शामी वो मैं उस तो पहले मन कर बस हो गया हाँ ठीक है 299 50 वेट टच फॉर लोअर है, वेट फॉर लोअर है। ये मार्केट बहुत बहुत क्रेओन, मैं इसको कहता हूँ क्रेओन। तो दो बच्चे नहीं होता है, बच्चा खेल रहा होता है पेंसिल से, ये सारे क्रेओन है। अच्छा डोंट गेट इन्वॉल्व, नॉट राइट नाउ। वो जो उस टाइम पे जाना था दे Can't believe one company can flip whole market upside down. सर अगर इसके देखें तो कंपैरेटिवली मच न्यूअर कंपनी एज कम्पेयर टू द अदर Yes, yes. 45 पॉइंट्स यहाँ गई है, 28 पॉइंट्स यहाँ गई। Shit, man. This is not right. भाई को बताया राहुल भाई हाँ जी $1700 प्लस सर जो मैंने आपको फोन से हाँ वो तो मैंने इनसे कहा भाई आपने एपेक्स बनाया कुछ नहीं हो सकता सॉरी लेकिन कल तो नहीं दिखा रहा, आज दिखा रहा है कि कैश अमाउंट 26,040 नहीं नहीं वो ठीक है लेकिन मैटर नहीं करता ना वो बनाया नहीं, बन गया। बन गया जिस तरह मर्जी पता नहीं जब बंद करने लगा तो देखा। लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है ये तो वही चीज़ है आपने और सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ डाउन दिखा रहा है 948, यानी कि अभी तक है अभी तक 1000 आपके पास है है लेकिन आपको आपका जो टारगेट है ना वो बहुत बड़ा हो गया बिकॉज सर ये टारगेट कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूँ एक दिन का भी मैक्सिमम निकालते हैं ये फंडेड कंपनीज के साथ आपको बहुत So my strategy came in, looked at the number R1, saw where it was, आते मैंने शॉर्ट कर दिया, हर अकाउंट में 200 बन गए. So नंबर देखता है कि 420 आ गया, वह क्या एरिया आ गया आपका, तो मैं यहाँ कहाँ से आ रही है 200 पॉइंट मार्केट चढ़ी हुई है, इस जोन में आ गया, सेल कर दिया, I'm technically done. So that's how just observing the किन्ने number. लॉट कितना था जी 5 माइक्रो के साथ अच्छा क्योंकि हुने आगे कितना अभी अभी बैठे बैठे ही आपके हाँ, साथ तो अभी तो यही कर लेते हैं। नहीं मैं आपसे पहले एरिया मेरे से मुझे तो मैं तो लेट हो गया हूँ आप 420 पे फेंकते जब एग्जैक्टली 427 पे थी तो सेल कर देते तो मुझे साढ़े 420 तक हाँ हाँ तो वहीं से फेंक देते 830 जैसे ही ये एरिया हो गए थे टच हो गए थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी फ्यूचर्स की नैस्डैक की मार्केट में आपको यू हैव टू एक्ट फास्ट ईएस में आप थोड़ा प्लान कर लोगे लेकिन नॉट इन अभी भी जा सकते हैं 400 लेट हो गया ना क्योंकि देखें 420 से आ रही है वो ऑलरेडी उसने आपको 420 पॉइंट तो दे दिया ना सो अब 420 पे फिर एंटर होंगे फिर फंस सकता बंदा सो दैट्स द ओनली इशू सेकेंड टाइम वो फिर काइंड ऑफ कैन बिकम ए 10 लिटिल पॉइंट लेके निकले जी मैं 10 पॉइंट
सॉरी 10 लॉट्स में एक पूरा मिनी लिया था, ओके नॉट माइक्रो, 5 मिनी 10, 10 माइक्रो मतलब मिनी हो गया। एक मिनी हो गया ना, तो 217, 232, 245, सो स्लोली अपना जो स्नैक उसको देना था। Let me see, this is done, live stream is done. All right, let me see if everything is good. The first area is done. R1 is done technically. Yep. For Nasdaq. So 20,427 was the high. 20,268 was the low. Night difference was 128, and R1 is done. Now consolidation, 372. 30 को नहीं मिडपॉइंट को टच करके भी तो गोल्ड फिर ऊपर चढ़ गया कल रात को, गोल्ड का पता नहीं 100 पॉइंट दे रहा हूँ। 100 पॉइंट चढ़ गई तो जरा ख्याल है, कल मैं 31 देखा सी ना, $1000 पर ट्रेड है वो। और ते मैं ये पता नहीं समझ नहीं है। इस टाइम में हाँ जी चढ़ गया जी, कल 31 में मिनिमम देखा सी, 52 है, 120 पॉइंट। What's the striking price today to go change is 575. 575. So expected high. 20,575. 52 में पहुंची हुई है। नहीं गोल्ड ऑल टाइम हाई है इस वक्त, ऑल टाइम हाई। तो पर गोल्ड आउटर बैंड से भी बाहर हाँ, नहीं कुछ बाहर है, पर आप देखो कितना है। When रिट्रेस दिया उसने पिछले दिनों 2619 तक आया था और फिर वापस चला गया, राइट? सो कल 2699 है, नहीं 20 पहले हफ्ता पहले, कल 31 से मैं देख रहा हूँ। नहीं Bloomberg ने कहा there is no ceiling inside until the elections. सो इलेक्शन क्या आ जाएगी यार, मुझे तो यही लगता है। सर स्विंग स्टेट्स में तो ट्रम्प ने थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गया। Every day $1 million की बंदे को गिफ्ट करता हूँ। Yes, I agree. Every day की पिक्चर आ रही है, खाली क्रिकेट में लिखता हूँ। $1 million every day गिफ्ट करता है। चलो सर लॉटरी पता नहीं नहीं उसके पहले उसके इलेक्शन में जाना है, रजिस्टर करना है, प्लेज करना है, वो लॉटरी निकाल रहा है ना, तो यहाँ 100 कमा रहे हो, वहाँ कर लो एक महीना में। नहीं 1 मिनट, या फिर 649 ले लें, $6 वो एवरी डे लक लगा लें। सर यहाँ 10-10 इकट्ठे करने हैं। हाँ, वो तो कहते हैं अगर कुछ ना करे, एवरी डे कुछ बिलियन खर्चे करे, ताकि वो अपने जिंदगी में रहे। हाँ, नहीं ये जो आज स्टॉक ऊपर गया है उसका पूरे कैंपेन का खत्म हो गया, मीन जितना उसने 30 डॉलर, so he has made billions. उनका ना गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा वो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यार जीसी और ईएस 30-20 ग्राफ बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। एपेक्स में भी मिनिमम हमें 1.25 डिट्टो से एपेक्स का कोई मिनिमम नहीं है, पी मैक्सिमम है 450, तो मिनिमम कुछ नहीं है एपेक्स का। I think everybody who's buying it should sell it, so product आपका वो profit taking starts, but let's see.
काफ़ी पॉजिटिव थी। All right, let me start my early brief. So good morning, everybody. Thursday, October 24th, 8:58 a.m. Good morning, good afternoon, good night, good wherever you guys are joining me from. So So the Nasdaq highs has been 20,427. R1 is done. Now let's look at the remaining. Morning, sir. Good morning, Ji. Good morning. What's that? My price is a little bit higher. टेस्ला ने कर दिया काम. Tesla ने कर दिया जी. Tesla up $30 in one night. मैं FTMO में अकाउंट लिया हुआ था. हाँ. रात स्विंग छोड़ गया था. बाय में? बाय. ठीक है, हो गया क्लियर. मेरे ख्याल 200 पॉइंट आता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये टेस्ला की अर्निंग्स आई and then everybody made lots of money. शाम को भी 270 को The Tesla is last night closed 213. Now it's $31 up. That is ridiculous, man. अभी और भी मेजर अर्निंग्स हैं. But area is done. 420 area is done. Let me just check the lows and highs. Everything looks good. 428 is the number. It went as high as 428, as low as 268. And let's see what happens next. बेसिकली 20,000 से वापस ही होगी. 37. कंफर्म कैसे होगी जब फ्रेंच के नाम ये नया हायर लोग ये बनाने जा रही है लोअर ये लोअर में बनाने अगर वैसे तो मिड बैन स्टेटस को है ये फिर ऊपर जा रही है ठीक है लेकिन ट्राई टू पुश डाउन ये डायवर्जन एरिया भी है 570 एरिया है 8 ठीक है वहाँ से बाउंस करके नीचे आ गई तो आपने देखा कि एक ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ पे कंफर्मेशन में वेट करो ठीक है पॉइंट के बाद 13 पॉइंट पे चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है 13 पॉइंट के बाद मार्केट मोमेंटम यूज करती है unless there is a news at that point of time, market loses its momentum. तेरा point. आप कहीं पे भी जाओ, ये देखते हैं, ये रिवर्सल आया, छोटा सा रेट्रेस आया, 13 पॉइंट के बाद क्या देख रहे हो, ये छोटा सा मोमेंटम देख रहे हो,
ये magenta is the reversal, filtering current. ये देख रहे हो 13 पॉइंट के बाद क्या आया? Tries to go back up. वहाँ पे भी नीचे गिर गई और फिर ऊपर गिर गई, ठीक है? तो इधर आ Tries to test R1 again. Let's see. पीछे चले जाओ, सीन कहानी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ये डाला होगा, ये देख रहे हो, यहाँ से 13 पॉइंट मोमेंटम यहाँ लूज हुआ, ऊपर भी नीचे So audio video should be okay. यहाँ से 5833.5 एक सेकंड 5833.5 plus 13 points 5846.5 5845.75 from आगे नीचे गई 13 points पर 13 points नहीं कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चलती, लेकिन जितनी भी चलती है आपको 2 पॉइंट तो देंगे। आगे देख रहे हो 13 पॉइंट के बाद ये देख रहे हो, यहाँ से 13 पॉइंट के बाद ये टाइट हुआ, ये नीचे गई और फिर आगे यहाँ से 13 पॉइंट के आसपास नीचे गई, वहाँ से मार्केट तो वैसे तो नीचे ही जाती है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, 13 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे गिरी, जब हिंदुस्तान था, बॉटम ऑफ द बार था, कुछ ना कुछ इन 15 दिन फिर वापस ऊपर उठी आ सकती है। तो रोज की प्रोटीन फंड्स मैंने बगैर मिक्स आया जो भी है उसके मोटिवेशन के हिसाब से अपना ऑर्डर डालो, 4 लोगों ने 200 लोगों तो जर्किंग मंडी में नजर टाइट हो रहा है। 13 पॉइंट से पहले मूवमेंट होगी आपकी फेवर में। 30 को नहीं रहता तो 5870 -30 उससे पहले तो ऐसे नहीं कर मार्केट 5857 या 58 पे मार्केट और नीचे ऊपर जाएगी। वेट So let's look at the news first, and your unemployment claims are less, so it means good, price is good, but let's see. Next is 9:45 a.m. Back to 400, back to R1.
Tesla is up $31 almost. $32. 15% in one day. Everything else is down. जी सर। छोटी सी हेल्प है हाँ जी। ये जो है इसमें जैसे वो ट्रेड दिखा रहा है ना आउटस्टैंडिंग पोजीशन अभी ये विंडो आई नहीं रही है। नहीं, आप कनेक्टेड हो पहले उस अकाउंट के साथ? हाँ जी कनेक्टेड। नहीं नहीं, अभी होना चाहिए। आप कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए FTMO। आप डेमो में? हाँ जी हाँ जी। सर नीचे वाला है, नीचे। Actually, 15 days में बिल्कुल आई है। वो कह रहे हैं कि ये फेल्ड ऑथराइजेशन एक्सपायर तो नहीं हो गया? नहीं ये इसको मान नहीं रहा। ये दोनों में कह रहे हैं नो कनेक्शन। पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे में ये डबल चेक कर लें उनकी दोबारा, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके इसी वजह से हुआ है। क्या नो ये 2 दफ़ा चल गया, सॉरी ये 2 दफ़ा चल गया। क्या, लेकिन ये अभी उस तरह नहीं चला जिस तरह चलना चाहिए। 10 पॉइंट दे दिए सर। 10 पॉइंट दिए? आई बोला 90 पे ना पूरा टच करके। साल से गैप ट्रेड बात हो रहा है। गैप ट्रेड बंद किया। मैं बात से गैप ट्रेड है। हम टू लेट अब उसको अपने लेट कर टाइम वो जैसे देखा वही गैप ट्रेड हो। आप देखो दोनों तरफ का इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्यों रिस्क है? दोनों तरफ का इंफॉर्मेशन one train that will be 64 dollars. तो मार्केटिंग हो रही है। Let's see, 401.
गुड मॉर्निंग जी। नीचे स्ट्रेंथ देखो 15 लाइन ऊपर है 12 में आएगा फिर मैं फाइल स्पीड बन गई कौन थले जाएगी अभी ट्रेड करा रहे हैं। एक बने ना मूवी करनी है कभी फायर को जाते कभी साइड को जाते ये ऑर्डर ये पहुंचे हैं 50 लोगों को पानी डालना होता भाई ने चढ़े लेमो ये बार मैं रियल से दो छड्डे की बात थी एफटीडी बढ़िया हो गया। हां फिर सब देखना आपको कैसे पता लगेगा? सर मैं 11 के बाद बताऊंगा, लेकिन आपको अब टारगेट बहुत दूर है, 1800 का 1 सेकेंड। अब आपको पैसे मिलेंगे, नहीं नहीं 900 डिवाइडेड बाय जवाब बनाते थे $3000। चैंपियन ले जब तक 3000 नहीं बनाएंगे ना तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आपका 1500 का टारगेट नहीं है, 3000 का। तो सैल नहीं किते बात सुन एक कौन और ठंडा पै गया फिर मस्ते ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੇਡੋ आ गया बहुत नहीं ये टारगेट लग गई डबल बस 1500 One more time, testing. Good morning, ji. ES is 64, so ES went as high as 70, so ES is done almost R above R1. 77 से आ रही है, R2 77 है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है वो भी अच्छी न्यूज़ आई, सर 70 से आ रही है। ऊपर ही जाए 70 से आ रही है। R1 में अभी ये नहीं सर ने चेंज कर दिया। ऊपर ही है आज किसके माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं नहीं आज नहीं, नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आज आई कौन सी कंपनी नहीं के आज किसी के नहीं, नेक्स्ट वीक। अब खत्म है इस वीक कुछ नहीं, आज तो सिर्फ लेट मी सी। माइक्रोसॉफ्ट के आज मेरे ख्याल से सर नहीं 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 आज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं 30 को, 30th को। तो आपके वो सुपर एरियाज में लिखा जाता है ना वो उधर, तो बिल्कुल डेट भी लिखा है हाँ डेट एवरी डे, सारों की अर्निंग सारों की। सो गूगल इज ऑन 29, AMD is 29, Microsoft Meta is on 30th. Let's see. यही 2 दिन बड़े हैं कुछ Amazon and Apple. So important is 29, 30, 31st. हाँ यही 3 दिन बड़े And एक गुजर गया, रात को देखा ना, एक सिर्फ अभी सिर्फ एक हुआ है। एक ने कल खिला के रखा So Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, that's 5, and then Tesla 6, Nvidia 7, the big 7. It's just we mean that don't trade at that time because market was 268 when पूरे मेरे सामने बैठते बैठते 300 भी क्रॉस कर गई वो। आईफोन 16 के रिजल्ट्स आएंगे, देखो क्या होता है।
Good morning जी. अलग होता है, मॉर्निंग का अलग होता है। सुबह वहाँ पे लिंक है एरियाज का। ये तो चीज़ें ना ये पता नहीं लगता क्वालिफाई वाला पता लगे. All right, 12 minutes to go. Let's see. Gold back up to 57, 27.54. My God, man. I think this is the highest price of gold in the history. थोड़ा एक्सपायर थी ना डेमो स्टार्ट करते हैं। All right, 10 more minutes and then the stock market opens and we'll get some volume. पूरा 50 पे है मार्केट, कुछ नहीं पता ऊपर है नीचे अभी जाएगी 50 पे। नहीं, लेकिन देखें ना कहाँ से चढ़ती आ रही है। कल रात का लो पता क्या था नैस्डैक का? नहीं, आज स्टॉक फिर ऊपर जाएगा ना इसका टेस्ला का। नहीं, एक रात में $30 चला गया और कितना जाना है? हर एक ने प्रॉफिट भी तो निकालना है। ठीक है, मैं कर देना। ठीक है, क्या एरर है जी? सॉरी। नहीं, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करें। इट्स अ प्रॉब्लम विद निंजा के साथ प्रॉब्लम चल रही है हॉटस्पॉट का। नहीं, कंप्यूटर फ़ोन से हॉटस्पॉट करके वाईफाई फिर ट्राई करें। हाँ जी, एनी डस्ट दो मैनू। लेजेंड्स वाला करना ठीक है, एनी डस्ट दो तो, लेकिन अपने हॉटस्पॉट ना कनेक्ट करना क्योंकि सॉरी 138516 एक्सेप्ट करना जी। 300 तक वेट किया था। हाँ, नहीं 86 तक $3 लेके वो 450 तक टेस्ला ने 1700 वाला से चला गया था ना। आ गया था प्राइस आपका? हाँ, मैं जाने सर से पूछा तो उन्होंने कहा था कि 340 तक आएगा। 2:30 बजे सर जब मैंने दोनों निकले ना, मैं बस 600 लेके निकला बाहर। आप बोला था ना जब जा रही है ऊपर जाएगी $600। नहीं, मैंने 120 से लॉन्ग कर दिया था। मैं $600 लेके निकला उस ट्रेड में। कितने जाना वाईफाई जाके लगेगा।
ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਗਏ ਏਪੈਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਨਿੰਜਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਪੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਆਲ ਡਨ ਸੋ all right in terms of what is going on primarily the stock everything is up due to Tesla is up $31 and that's why the Nasdaq is gone S&P is gone ridiculously high we are already done R1 and there's not so much distance between R2 if the price goes above 575 that would be a good resistance so ग्रीन आ गया तो जाने में उसको सेल करना होगा थोड़े आगे तो ट्राई करना होगा ओके लेकिन शाम के टाइम पे स्वीट नहीं देखोगे स्वीट एरिया से तक एक पीस भी था यार उनके मंडे टू थर्सडे फ्राइडे ना हुए कि शाम में इवेंट है ना रोज शाम में आ शाम में पुराना कल का मतलब मैं वही शाम का मैं उस कनैक्ट करके जिदा चैट रूम मीटिंग मैं इतना नंबर कि मुझे all right in about 2 minutes he's going to start speaking कुछ और बाकी डाउन का पूर्ण ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ खत्म हो गया चीज़ अपने ओके मंडे टू थर्सडे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ और तुम
All right, I'm gonna go on mute, guys. He's gonna go online anytime. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Came show microphone check if you can hear him. G. Walaikum Salam. Jane G. Good morning. Saurabh. Good morning. Joy Saab. Ash. Good morning. Altaf Bhai. Lal Ji. Ranjan Ji. Good morning. Rizwan Bhai. Jesse Ji. Good morning. Man Preet Ji. Mahip. Ayaz Bhai. Ranjit Ji. Good morning. Amir Zakir, good morning. Athar Shinder Ji, good morning. Rabi, good morning. Clifford Ji. Manish Gurpreet Ji, good morning. Good morning. Murli Ji. Amrit Inder, good morning. Majid, good morning. Jay Prague. Sayyid Ali Ji, good morning. Jagdeep Ji, Akshay, good morning. Good morning, everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material in posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you, and we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions, and don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses, and do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you trade. And here are the areas, guys, and these areas are not buy and sell areas or buy and sell offer or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today our S&P 500 except Dow, three markets are synced: Nasdaq, S&P, and Russell 2000. We knew that price went to extreme areas, a bit lower than extreme. So our 68 to 75% area is due, and price went up exactly. Went to, if you see S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, absolutely 66%, 68%, 67%. It went up and hit our R1 area. Base is up, pressure is down, high to go low, any area, R1, R2. To go low would be a good strategy today. Magic band is screaming to the downside. And other thing that is pushing market to the downside is Dow. Dow is below PP, below value area. So Dow is below PP, below value area, 103 points, one tick on S&P 500 swing. That's a huge swing, and 69 points push to the upside. Our Dow is not going down, 772 points. That's not, it's not a swing to the downside. 523 points. Beautiful push to the downside on our Nasdaq, and this was expected from Monday to drop, but they keep people for longer hold, so people get panicked. Some people, they have small money in the account, and that's what happened. And we had very strong push to the downside. Yesterday I would avoid long-term buying, but short-term buying you can buy from anywhere. Same thing today. I will avoid long-term buying, but selling and short side would be a very good idea anywhere from any resistance area or even support area to sell. How you will sell support area? When your support breaks, price free fall to the downside, then bounce back up to test that area, you sell at under support area to go further down. Today our mostly markets are up, base is up, and some markets already hit our expected high for the day. Only one market that is down mean the base is down, everything else base is up. Everything, especially if you look at the British pound, Canadian dollar, euro, crude oil, even gold went to, we had a very nice beautiful drop on gold to the downside, big push to the downside, $50.50 and retrace back up. Almost cover up more than 67, but almost 68% push to the upside on our
gold. Then we have British pound expected high for the day is done from yesterday, expected low for the day. British pound and Canadian dollar. You remember Canadian dollar, we had interest rate cut news, and that's where Canadian dollar went to 100% our expected low for the day and bounced back up. And right now just sitting at R1 area. Canadian dollar, our base is up, pressure is down, base is up, pressure is down, but sitting at R1 area right now. And euro, same thing at our expected high for the day. So euro already at our expected high for the day. Gold, again I'm telling you guys, gold, I had a strategy. Look, everybody have their own favorite thing. Me, myself, if I ever trade, I will only go long on the gold. I will never short gold whatsoever. Even it's out for 240, it creates a diversion. We knew that. A brutal, if you remember yesterday, I told you we have a very strong diversion to the downside on gold, because that's a very sharp, not a long, it's a sharp break of our previous day high, and we see a $50 dip to the downside. But gold long term, remember, gold is up. The best is whenever gold come out from our 240 chart, go long on the gold. Crude oil $2.21. Nice, beautiful push to the upside. Went to our exactly expected high for the day. If you remember yesterday, expected high hit and shoot to the downside. I believe 72.40 was our high. 72 to 72.40. It just shoot to $1.41, mean $1,410 push to the downside in just 2 hours. That happened in just 2 hours while we're sitting here. Crude oil drop and dip to the downside, went to mid-band green, top of the value area, PP, multi-support at where the crude oil is sitting in. Crude oil base is up, pressure is up, the retracement we have. Natural gas, beautiful. We knew that natural gas, further if we get in the cold, we have a push to the upside. Natural gas, even long term is up, even short term is up. Natural gas, very nice, beautiful push. Yesterday went to our extreme high, natural gas, retraced back down, 37, almost 37.5% retracement, and now extension to the upside. Already break our yesterday retracement and trying to reach to our 48 cents, $2.48 push to the upside. So right now S&P 500, Russell is not going down. Russell just sitting at very close to night session high area. NASDAQ very nicely pushed down, and Dow break our night session low at S1 area. So S1 area, we have a S1. If you remember, our S1 is our 2 o'clock close and 3 o'clock open. The both 2 to 3 close and open, so that's a very strong crucial area for NASDAQ. We have Dow. If we have anything close below 600, we'll see a tank to the downside on our Dow. News, we have news is coming at 9:45. We have manufacturing PMI, flash, and service PMI, and then new home sales. Green to go down, red to go up, flat, straight. Green to go up and green to go down, and red to go up. And 7 minutes to go, 8 minutes to go for the news, and then 10 o'clock we'll see new home sales again. Green to go down and red to go up. Natural gas storage, natural gas storage, they're expecting less storage. The price has to go up. Please guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. High to go low, stay in low from the high would be a good strategy, guys. Please guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. One more thing I want to cover up here for tomorrow. We have core durable goods are coming, and then we have University of Michigan 10 o'clock. The best is high to go. The best is high to go for tomorrow, both the areas and their direction as well. Please guys, take the areas. If you have any question, call me. I will be here. हाई टू लो कि अगर प्राइस आर जोन में चली जाए ना तो वहाँ से सेल करना है. हाई टू गो लो, सो हाई चला जाए नीचे, अब लो टू गो हाई मीनिंग कि अब नीचे चली जाए तो आपने सेल करना, बाय करना है.
अब हम वेट कर रहे हैं R2 का. तो जो एरिया कर रहे हैं, you gotta watch R2 because R1 is done for NASDAQ and ES both. So if you want to sell, he said sell from R2. If for those doing areas, R2 is the number to watch for. नहीं नहीं, no. Too close. Because if it slips, because everybody's going to start cashing out that profit, right? That Tesla went up $31. Anybody bought it must sell it, price. So if again like yesterday, maybe 10 points, but because it came as close as 324, right? And if it sweeps down, what is the next area to watch for is 220. That would be a good range. S1 पे S1 नहीं S1 भी हो गया. देखो, so S1 is done. So it was came down, S1 is done. So now we watch for 27 to 30. मैं एक्सपीरियंस Yeah, SP. So 27 to 30 is a good buy for a few points. So let's see which way it wants to go today. And FTT denied a lot of our payouts. They said we didn't have enough days where I didn't make more than 375. So I traded 20 days, only 6 days were over 375. So they said go back and work more. So it's okay. We are just 4 days. so 4 days I gotta make 375 and higher, right? So no, it is, but it's annoying. It's just we were waiting. We do like to work for making money, right? And like $24,000 just said only 3,000 they approved. Remaining it says go back and make more money. So नहीं वो भी नहीं दे रहे ना. Decline. Every single thing says decline. चेंज की है Yes. उसके बाद अलग बताइए तो पहले I know, but everybody is burnt together, unfortunately. इतना फंड ही नहीं है देने को उनके पास यार I just hope they don't go bankrupt, right? That's my only problem. इतना फंड ही नहीं है जितना बना के तो ले रहे हैं So let's see which way it wants to go. I'm waiting for R2, honestly, for NASDAQ. That's my game plan is. Let's see. And a company like this, then you don't want to promote it, then you don't want to do any work for them. That, you know, I rather give my business to maybe FTMO. 480. Sir, from FTMO, when you get an actual account, after passing the 2 stage, they have the same rules? No. The same rules. You cannot lose more than 10,000. You cannot lose. So basically, for free, I got a $20,000 account. Right. So I worked to 20, then that's how FTMO But the works. daily loss stays the same. Daily loss stays the same because they want to make sure that you don't just randomly, crazily Right. go for it, right? So. या 330 या 350 के बीच में भी फंसा के रखता है He was testing S1 quite a bit. थोड़ा फ्लिप कर जाएगा S1 पे आ जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा S1 पे
You know, honestly, if you play with 5 micro on FTT with 450, the $7,500 account, it's not that difficult. Each swing, you want to take 20, 50 bucks, 50 bucks, and then, बस पॉइंट कर लीजिए 30 से 45 तक ले Yes. जाइए इजीली। so back up to that zone. So let's see which way the stock is going now. Oh, some news, guys, news. Be ready, news. News. Flash PMI index, Yes. flash service PMI. News, guys. Neutral. मैन्युफैक्चरिंग की आई है न्यूट्रल आई हाई स्लाइटली आपका तो स्लाइटली आता है तो न्यूट्रल नहीं आता गुड आ या स्लाइटली गुड है लेकिन न्यूट्रल दी रेंज है ये नहीं तोड़ रही ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮਾਰ 15 बार फिर न्यूज है न्यू होम सेल्स की ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ मीडियम इम्पैक्ट है Crazy. Short, I really like. Just keep selling and then make money. High to go low. So we are officially at S1 almost 308. So बाय कितना बन रहा है sir, buy S2 expected low. High to go today, same plan, high to go low. So daily है short. मेरे में buy की हिम्मत नहीं आती unless expected low हो ना आएगी ना तो बाय S2 S3. फिर कल तो 3 पे बाय लेते हाथ काम पे नहीं लेकिन हमने लिया प्रॉपर लिया छोटा लिया यानी 10 पॉइंट्स का कोई बात नहीं सर इट्स ओके Wow. Everybody is above 375, no longer going to work with them. Done for the day.
स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रनिंग चल रही है फिर आज On 296, so I'm calling S1 done, to be honest. Yeah, look, 296. 270 है No, first is 290. So S1 is done for Nasdaq. 290 लगा दिया Yeah, 296 आ गया ना. 296 लगा गया नीचे का देख रहा हूँ Okay, I'll be right back. उन्होंने कहा कि आज सेल डंप करना है कि जब मार्केट ऊपर गिरी है सुबह जी पहले तो लिमिट लाके रख दिया अब जो चल जाता है उसमें थोड़ा बहुत है ना क्योंकि मार्केट में चल रही होगी ना तो यूजर 270 भी है कई बार 274 होती चली गई कल भी 270 सेम नंबर से 272 होती चली गई वैसे हाँ लाख 74 पे ला दें हाँ लाख 74 पहले अच्छा जिन्हें देख सकते हैं कई बार साढ़े लाया वो कभी तेज होती कोई केस भी कर लेंगे मेरे नाल इको बारी होई ते मेरा काम मैंने मैं वैसे 1500 का प्रॉफिट होता मैंने 1500 का प्रॉफिट हो गया उन्होंने लिमिटेड कुछ 36 का प्रॉफिट मैं तो ऐसे पता नहीं चलता If you have pressure down written, it means high to go low. So stay in short. If the pressure is up, low to go high. So now what we are waiting for is this number, 77, and I'm waiting for 480 to 500. That's my entry. So, what are we up to? Back to 350 zone? Yes. इसका नेगेटिव बैलेंस खत्म हो गया नहीं है तो ये मेरे कल फ्रेंड ने किया उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं है मीनिंग जो नेगेटिव प्रेशर होता है हाँ वो नहीं है Sure? yeah live threshold है ना yeah we still have, otherwise everybody will jump back to apex. Let me confirm no, I'll check right now because if you see 100 you get to 50. हाँ वो नहीं हुआ कल सर
उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है। Live नहीं हो रहा? लाइव में सर। There was a whole email with all the rules. But I didn't see. mention over there. I know, but yesterday it didn't happen. That's what I wanted. No, it still says trailing threshold is there. It's yeah. Yeah, trailing Yeah. threshold. Yes. Maybe he's watching a different one, but it is 100%. Yeah. Because that's how they make money, Money, correct. right? There's No other way. no other way. Agreed. Apex changes a lot of rules, meaning the 8 days, dollar cost average, quite a few, but trailing threshold is still, there you go, we have a bit of a news again. Well, is there any? 10 o'clock. 10 o'clock is the next news thing. So I guess they felt a lot of pressure from Legends and FTT. Yes, yeah, they felt, because you see, like our guys, all I have to do is just say, go there. Everybody says go there, right? Because I'm looking out for you guys to see which one is the best possible firm. For the 1 year, Apex was good. Now we have more competitions like Legends and things like that, so. $350, will it go? I'll take an exposure of 10 more. Yeah, so keeps climbing. Oh. Let's see. Now we see a bit of a movement in the market. That's good. So Apex allowed news trading as well. Yeah, Apex allowed news trading. So news trading, 8 days, and all of this. Okay, शाम पे 10 घंटा कल शाम तो कोई ट्रेड नहीं है आज शाम 4 कोई ट्रेड नहीं हो गया जो आज शाम 4 मतलब जो माइनस हुआ पहले आज के माइनस होती शेवा तक कल शाम में शेवा तो लेके आज 4 बजे तक 4:15 News in 2 minutes, guys. New home sales. It is medium impact. So be ready. I wish it can go to, again, night session low, 268. That would be nice. News in 1 minute. 44.
So they're expecting 719,000. Let's see how many people buy homes in US. Tesla is now sitting at $249. Tesla is up $35. मोबाइल पे अपडेट नहीं दे रहा हूँ। मैं trading view से trading view. So there you go. News is there. Done, done, done. Boom, boom. Let's see. The news is pending, pending. And the craziness starts now. डॉल भी नीचे है ना। More sales. बहुत से लोग मैं क्या अपडेट So the market starts moving before we see the actual. Yeah, yeah, because bigger boys already have it before us. They have like Bloomberg terminals. or something No, like no, that? they have they have the news in front of it. लीकेज Leakage, that's the word they use, correct. Bloomberg terminals भी होते हैं ना उनको पहले पता Inside. लगता है. वही लीकेज वाले एक ही बार बोले। Let's see which way now it's किसको नहीं going. पता होगा तो किसको पता है कहाँ पीछे They're sharks, man. Sir, when are you going to Shark Tank? No. That was a long time ago. Said No, no, we applied for it, but didn't get an answer. So, let's see. I guess there's a long backlog over there as well. No, no, they want to look at some ideas. So our interview was pretty extensive on Was it Shark Tank or Dragon's Den? their dragons. Then we're not allowed in Shark Tank because we're a Canadian company. I see. वॉल्यूम ही नहीं है All right, guys, let's see. Back up more. नहीं छोड़ देगा ना वॉल्यूम ही नहीं सकता है Crazy. इन्हें पठान में रुकने देखते हैं अपडेट करेंगे Too volatile right now. Data suppliers from as to area returning by R1 मैं कर रहा हूँ. 356. कई बार बच्चा के ओनर 361. बट मेन जो कंप्यूटर आएगा वो रेफर कर दिया So a lot more home sales, a lot more. Green. A lot of Canadians buying over there as well. Yes, there's the issue because of NASDAQ and NASDAQ and Hutchwood Crown. मतलब कुछ सवाल का नहीं है NASDAQ. नेक्स्ट है 370, 371. Who is buying what? Tesla is $250. So it's only Tesla taking it up. $35 in one day. ये वेट कर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ यूज़ करना ਕਿਦਾਂ What a beautiful drop. नहीं आई नो दैट ये तो नेक्स्ट वीक में आएगा मैं सोच रही हूँ कि इस वीक कमाल में पेपर ले आऊँगा It was 40-point dump. तो एक सॉफ्टवेयर के साथ दो पूरा चार्ट दे दूँगा खुले का चार्ट दे दूँगा ओके मैं आपको देना है एंड अच्छी लिखी है मैं आपका ये जितने भी मैं आपको कौन देना दूसरा खोले वो तो खोलन ते है मतलब फिर ईएस बंद हो जाए एक अकाउंट ही देना है उसका डेटा है दूसरे होते हैं मुझे दूसरे अकाउंट बाय करोगे नोटिस दे देंगे अच्छा अकाउंट दो बाय करने का लेकिन मेरा ख्याल है सिंगल अकाउंट यूज नहीं होगा मतलब दो दो चल रहे जी आप लोग तो दो चलते हैं अकाउंट सेम ही है डिफरेंट मार्केट सेम अकाउंट कन्फर्म हो जाए सर एक अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ डिफरेंट मार्केट Yeah, जितने मर्जी, but not same market. Let's say Nasdaq or yes, you can go long or short. But yes, you can go long Nasdaq, short crude oil, long. So one account, multiple markets, any direction. But cannot do same different direction, same market. Hedging, that hedge cannot happen. मतलब सेम डायरेक्शन ਦੇ देखो मार्केट पे करो ES. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ES ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके ओके Staying in short will be beneficial, guys, honestly. It is crazy going down.
so difficult to wait. So waiting is the worst part of trading. But that's the most profitable. Because we're waiting, so think of it, you want to buy a property. Are you just going to buy market price? No, like you're waiting for the good price. So what was the good price? R2. That's a good price to sell from. Now it's consolidation, 10 up, 10 down, 10 up, 10 down. So 330 पे ना उठा के हमारे yeah, so 330 to 400. Yes. But remember, it is coming from expected low. So it's already up significantly. बहुत. All right, 350. Nasdaq की भी केस चल रही है वो फिर वहाँ से ब्रेक करेगा तो वो भी क्लोज चलेगी होगी मतलब स्टेलर वाइज स्लो ही है थोड़ा वॉल्यूम कट करके टाइम वो वरना बहुत तेज चलती है ऐसे तो ट्रैक नहीं कर सकते जिन्हें बहुत तेज चल रही है All right, 37. Back up, 350 again. Okay. 350. आपने कोई ट्रेड लिया अभी तक? नहीं सर ये जगह वेट कर नहीं, वो मेरे से पहले आप आ गए थे. R2 तो R1 तो पहुंचा हुआ है. कार नहीं खुली अच्छा अच्छा. दुकान खुलेगी फिर ही काम चलेगा R1. Anybody shorted from R1? लॉन्ग किया No. You did, yeah. So you saw R1 and you 330 पे लॉन्ग किया था तो स्टॉक करना वहीं पे काट दिया 50 पे ये मार्केट जाएगी S8 में चल जाएगी मार्केट let's see. बहुत हमने बाई नहीं करना जल्दी थल्ले जाने से तो मार दें तो बाई आज चलती भी है ना कल चलती भी All right, 360. कल्ले में रखा है अभी कल जाएगा आज ना कभी फ्री नहीं जाता बड़ी है ना मेरा इन्हें बाई मारी होगा वापस हम बड़ी It goes to mid band, comes down instant. कई बार ऐसे लगता है ये से ज़्यादा मिड बैंड ये नैस्डैक में चल रहे होते हैं लेकिन बहुत स्पीड बहुत होती है. Like 1, 2, 3, 4, 5 time touch mid band. जाएगी ना सर 420 भी तोड़ेगी ये 420 नाइट आ रही है ना तो कहते हैं 420 थोड़े R2 पे जाए आ जाए ये 30 और 50 के बीच में प्ले कर रही है वो 30 से नीचे जाए तो जाए बहुत हारी है कैनाडा
All right, went back up 370. गया सर मीडिया का 300 गया 140 गया नहीं जाएगा $5 नीचे आना मैं 500 पॉइंट मार्केट गिरेगी तो Let me see what if I can. 37 से चला गया ना ऊपर ये मार्केट आप कर रहे हैं Amazon भी आपका है Netflix भी आपका है सारे ही मार्केट डाउन है कितना लिया शिवा लॉन्ग टर्म नहीं छाड़ दो लॉन्ग टर्म ਡੈਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਬਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ 1 ਸਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਡ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਉਨੇ ਡੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖੋ 9 ਜ਼ੀਰੋ 8 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰਾਇਆ 7-8 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ 4 ਰਹਿ ਗਏ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ
$200 ਦਾ ਸ਼ੀਬਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ 560 ਆਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਰਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ $100 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ $100 ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ $100 ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ $50,000 ਇੱਕ ਪਤਾ $100 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡਾਊਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋਏ ਅਭੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਏ 120 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਤੀ ਗੋਲਡ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਪਿਆ ਸੈਨ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਕਰਦਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 17 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 27 ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦਾ 40 ਆ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਦਾ 40 ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਪੈ ਜੀ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲੌਂਗ ਬਰੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਕੌਣ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ $1 $100 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਗੇ No, thank you. ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ और किया हुआ है सर हमेशा से 70 Sorry? बेंच नहीं 370 से शॉर्ट किया हुआ है। देखिए उसमें कुछ में तो मैं निकाल लिया प्रॉफिट, कुछ अर्ली शॉर्ट किए हुए थे। लेट्स से स्टेज 2 $500, so $9,500 to make. So the moment I make $9,500, my $1,200 will come back to me, and I have an account open with $20,000. आज 500 बनाया 500 ले लेंगे कल 500, फिर 20, 25, 30 दिन बाद फिर रोज के 100। आसान है ना। So but takes that honestly, even आज भी आप देखें ना, my exposure to the market is no more than 20 micros, 2 minis, right? So like five I accidentally hit buy accidentally, and then I had to take a loss whenever. It's not like, so I took a $50 loss, but if you will see me mostly today, yes, आज है ना 24 तारीख, आते ही मैं कंप्यूटर बैठा हूँ 5 माइक्रो सेल। So what is the goal? 200 to 300 daily, 200 to 300, but from the area, not Sure, FTM is very tempting actually. it I'm not at that stage right now. No. But yeah, but it's very tempting. This is the easiest game plan in the market, and here's the good thing about it. FTMO is banned in US. It's banned? Yeah, so it means we have that market who doesn't play that. That's what shows the price in euros. Yes, so it's a European company.
So FTMO is banned in US. I guess they banned in Pakistan as well. I think no, I think it's allowed. May not be. I don't know exactly. I heard from Majid Bhai, so I have to check which company allows. I guess there's a lot of abuse going on. Oh, lots of abuse. हमारे तो आपको पता ही है. Abuse शुरू हो जाए तो. Back up 360, sell maybe 5. ES का S1 बड़ा बेहतरीन चला. ES का S1. But I'm still waiting for S2. Gave almost 14 points. कहता है फंस जाओ ट्रेड में आगे इनाम में भाई फिर 50 पे आ गया 30 से 50 से 120 पे 30 कुछ दिनों पहले 500 पे फंस रहा था. Yeah. The day it went to 602, I'm like, uh-oh, this is about to go crazy. Because remember, we are 948 is the highest ever for Nasdaq, right? लेकिन सर आप मिड बैंड तो साथ साथ लें, एरिया तो ठीक है, ग्रीन टू बाय रेड टू सेल, ग्रीन टू बाय रेड टू सेल ES में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसमें भी होनी चाहिए ना. अगर ठीक है एरिया तो देर बाद आता है. सो 252 नहीं वो तो 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. So you can check your status yesterday. What's DCA? Dollar cost average. So that's called, that's a really big benefit for guys like me who like to honestly go kind of crazy with DCA. So every trade is now closed because the market fell to my point and 47 points. But I'm not a buy person, so I'm going to, आपने लेके 10 points लीजिएगा. That's the reason I don't like to go buy. Just like it's overbought, comes to midband and tests it. Just like look at this, oversold, touch midband, goes down. That's the always the scary part. And me and on Saturday, a couple of guys were testing. They're like, I'm gonna let the swing go, not take an oversold or overbought. After the midband, the diversion trade, I will do it better. Right. Then he's like, I'm eliminated the risk of overbought, oversold. So he's like, test this. So, you know, everybody says, don't take the first swing down or up. Let it test midband. If it goes up, then sell. Right? So he's look at look. He wouldn't have entered this swing, right? Right. So oversold, test midband, second time lower low, then buy. So he's like, I wait for it to see the previous low break, and then I take it long. That makes sense. So look at it, tested 3 times, but let's see if it goes from here, you have more sure shot that it's gonna go, because that he says until that mid band is green or magenta, I'm not taking it, because it will touch that mid band, come back, and then shoot back. Look at this, exactly what happened. It happens a lot actually. Yeah. So if you want to eliminate that risk of overbought, oversold, गिरने दे, mid band test होने दे, and then come down and then go up because of diversion trade. Right. So we have more chance. आपने 10 पॉइंट ले लिए? दिए थे उन्होंने. यार, come on. मुझे नजर आ रहा है कि. But if you watch this closely, and he texted me the other day, he's like,
you are taking overbought, oversold just straight down, Right. hoping the swing is going to go back up like this. Right. He's like, no, I eliminated my risk by at least 40% now. Let the swing come down, test the mid-band. Oh yeah, there is still a chance it can go back up, no problem. But if it's coming down, he waits for it to see if mid-band breaks or not. Right. If it touches it, then he will enter in the overbought. So, oversold. And same idea. So, yes, the discussion that I was having with somebody, if you are planning to do NQ overbought, oversold, another thing to look for is another trader said, this is a strategy he's been doing really good. So, market comes down, this is oversold. Okay, so the swing was, for example, 45 points in this case. We had a swing, right? And then we are tempted to, now this is 99.5 or actually 0.5 that I'm going to buy. But here's a mid-band running. So what he does, he waits for this, comes down, and then will go long after this. So because the chances of this swing, he studied, are at least 40%, 50%. But chances of these swings, he back tested, are a lot more. So basically, in a single swing, Yes. taking the second overbought. second overbought. So if it's going up, he's not just selling from here. This is the mid-band. He waits here, goes back up, and then maybe sell from here. Because even though this is a 50 points, remember that happened 70 point swing? It came back, not enough, shot, but then he's like, I will take an attempt after. Second Way attempt. less risk reaction. So look at this happen here. Exactly 50 points came down. How was the swing was 47 points. हाँ वो कह रहा है कि जब तक मिड बैंड पहला मैं टेस्ट हो लेने देता हूँ. अगर तो मिड बैंड टेस्ट हो गया उसने मिस कर दी. You know some. But most of the time he says keep watching it. It will get overbought. Test mid band, go back up. So this is a better probability, right? That बैंड एक पहला निकाल दो. वो कह रहा है कि अगर मिस हो गया तो मिस हो गया. तो Nasdaq not Nasdaq का एक एरिया है ना. Nasdaq is area, right? But some people like Maruji like to take overbought, oversold. Like she's the one who really tests the limit of it. I was speaking to a trader on Saturday. He's like, this is great, 30%. Like, look, overbought, mid-band, overbought again. So he doesn't, what he's doing, or they're doing is, this is overbought. So the market is 45 points up. And this is 99.9. And technically it should come down. But sometime it only comes to the mid-band and shoots back up. Right? This happens and then you are stuck. And you want to do an average. He's like, just skip this mid-band and enter after. Yeah, let it go overbought again. Second overbought. Now, sir, the question arises that does he wait again till 90? No, he doesn't. He's just waiting for this to break. So let's say if this number is 20,100, right? Right. It came down, tested the mid-band. He's waiting as much to go higher and then sell. Yes. Pichla high break kar de, and when it's coming down, let's say the price is 2,100, he waits for the mid-band and then lower than this number would be a long. That's actually very interesting. So that's and I'm like, I never paid attention. Too many. I'm doing area. He's like, try this. Your success rate on overbought, oversold will significantly improve. Right? So he's like, I'm never taking. I don't care. It's a 100-point swing. That 99 will trap you. Some people will enter here. Mid-band, go high. He says, let me wait for the mid-band to see if it's going to pass or not. Actually, I have noticed that 99 is the number that traps you the most. At Yes. Because 97, 98 it goes down. Yeah, look at what happened. Now we are up again, 360, right? So he will not do it again. He will now he will test mid-band and maybe sell from higher. लेकिन चढ़ गई, overbought हो गई ना? तो कितनी overbought हो गई? 361. 30-20.
how's Hashmi Saab's strategy going? The one that he was talking to you about it. To be honest, I have Much not. attention? Because of, for me, it was purely areas I really didn't pay attention, you know. Right. फैमिली के साथ नहीं ये करते So let's see. Look at the swing, huge swing. पहले निकल गया ना इसमें बड़े सौ हो गए $100. So look, it got overbought, and then he's like, let it go up, and maybe he will sell from this point, right? So to eliminate that risk of Sir, all waiting, all waiting. The next area is, it's gonna see if it tested R1 again. Let's see. Be good for NASDAQ. मैं ऊपर वाली रेट से 420 से ऊपर. नहीं, ये पैरामीटर को टेस्ट करते कोई नहीं करता. वो जो ये वो करता है उसमें वो सी ओवर Come on, Scott. Give us something. भाई गोल्ड क्या गोल्ड सर आ गया है नीचे सेल के लोगों ने प्रॉफिट लिया? नहीं ना, या 37. गोल्ड 24.5 Tesla up 17%. Wow.
ये 300 चला जाएगा। How much did I buy them? I spent 309 Canadian. I bought it at $42 if I want to sell. So do you guys get together on every Saturday? Every Saturday over there. Every But Saturday. for your huddle kind of thing? No. After we just gup shop, like after from 5 to 6, just sit down. We'll start drawing on the board, like Hashmi Saab, Jay, myself, Ata. Everybody's welcome? Everybody's welcome. Just kind of discussion, open. Like, what do you do? What do I do? Like, so at least me, Ata, Saki, Hashmi Saab, Jay, Mansoor, Murtaz. These are the 6 and 7 guys who just really brainstorm how was the week. And so. See, it's 10:42 and I have eaten, but it's one of those things where I'm gonna. Cravings. So it's better to shut it down than to give them all the money. So ये इसकी समझ तो आती है, आज वो Nasdaq भी वो इतना slow move कर रही है. नहीं वो पूरी रात जो इतना मूव कर गए तो it is just now it's in consolidation between do I want to go to R2 or for Nasdaq. Yeah. I'm just in 5 micro short sir. मैं short हूँ 212 से, अब 212, अब यहाँ प्राइस चल रही है 200, नहीं मैं FTM, वो फ़र्क है 20,371 माइनस $160 का फ़र्क है ना, तो वो आप देख लें 219. So that's not futures? No, that's not futures. This is called CFD, contract for difference. The price truly moves $1. So if you want to take $5 profit, you have to wait for the price to move $5. So what we do is when we put 5 lots, and if it moves $5, we make $25. So, but the good thing about CFD is you can go 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, so you can reduce your risk even lower than micro. So. मैं 199 से सेल में हूँ, मैं तो बाय में खेल रहा था, आपने सेल कहा तो सेल ही लगा दिया। नहीं सेल ही है सर, सेल अभी तो सेल बनता है यार, आ गया मेरा तो प्रॉफिट में आ गया. So ये 60 लगा के फिर निकल जाता है 59. see 358 is my number, so 358 minus इतना चल रहा है ना, 4 पॉइंट नीचे 4 ऊपर. every day sir, जिसे कहते हैं ना show is over already. एक लंबी स्विंग ले जाए नीचे की.
पहले खींच के ले गया And my FTT, I have to make $100 more. I'm at 251. This is annoying, super annoying, because at 252 I was done, right? Now I have to make 375 to be able to qualify. So make 125 actually. It's 375, right? 375. You are at 251. I have to. No. My current profit is 250, right? So You have to make 125. 125 more. There you go. There you go. Big swings. Big swing. Come on down. 342. All right, let's close this. लिया जी? वो तो $70 ले लिया 50 के ऊपर लेना है जब भी दिखाओ So I'm at 329. So I need to get to 375. So no, वो FTMO का FTT का जो मिनिमम है ना वो 375 है ना. तो 600 बना दो भाई अगर कोई बंदा 375 बना लेना खुद, उसको इन सारे अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती. इतना हाई टारगेट कर दिया है. मैंने 428 बना दिया हुआ मैं हूँ 324 पे. 428 बना मैं सर आपकी तरह तो नहीं, मैं 2 माइक्रो से जाता हूँ. मैं 3 से अच्छा आप 3 3 है मेरा मैंने 5 भी नहीं किए आपने 5 बोला था कि फेंक दो तो मैंने फेंके का मन नहीं कर रहा है उड़ते बड़े जल्दी मैंने देखा उनके साथ 5 आप 5 पे जा रहे हैं? 5 भेजे अभी आ रहे हैं 220 जी सर, हो गया फिक्स? अच्छा रिफंड कर दिया, फिर अभी पे करें. ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ये है कि वो पे नहीं ना किया, तो वो जो पास हुआ था उसकी फीसें निकल रही हैं ना. नहीं एडजस्ट नहीं होगी. सर इस हिसाब से तो 375 बैंडेज बना के हाँ. बैलेंस कभी 100 150 7500 बनाना है. हाँ नहीं 785 बचा ना बाकी किसका? ट्रेडिफाई. कहते हैं 10 दिन Yeah, brilliant plan, because first you do the grunt work in 375, like so. Of course, like I have 22 days, only 4 were above 375. My balance is good. I only have to work 6 more days, not like 20 days, right? So. तो बाकी दिन तो आराम से करते हैं सर आराम से नहीं ना, प्रॉब्लम ये है कि नाज़दाक का दिमाग में जो कीड़ा है ना वो काटता रहता है. ले जाता है सर मैं फिर गोल्ड पे घुस जाता हूँ ना 50 नहीं, आपकी हिम्मत है गोल्ड के लिए सर, आपकी हिम्मत है. 5000 बना के फिर पीछे चला गया I don't know how people do gold. Because what to analyze? I don't know what to analyze for gold. Here, I can watch Tesla, NASDAQ, like crude oil, natural gas, and gold. These 3 commodities, I have no idea who do I follow. Psychologically speaking, I guess it's less interesting for you because you find NASDAQ way more interesting. Like No, for me, NASDAQ, I know exactly the reason NASDAQ went up. Right. Tesla was up 16% in one night. So NASDAQ has to go up. Where can I short NASDAQ? And then tech, it's not even tech stock, even S&P, right? So let's close positive here. 342. Man, this is super annoying. 375 minus 342. $33 more to make to my daily target of FTT. आपने सेल लिया कोई? सेल नहीं, देखिए ना. Go.
ने 2 कर दिए 450 बना हुआ हाँ, हाँ, दो कर दिए Good idea, good idea. No reason to jeopardize your risk. ये भी पैसा बना हुआ है ले जाना है इन्होंने नहीं, अगर सेल करना है 440 के ऊपर से लॉन्ग है ये 430 जो है ना ये 330 जो है लॉन्ग की है आपकी हिम्मत है, आप लॉग करते हैं. आई एम नॉट अ लॉन्ग गाय. मार्केट हाई जा रही है ना, जब वो प्रॉफिट निकालेंगे तब सेल की बनेगी. शॉर्ट में आ रहे हैं वैसे पैसे. Close positive 361. Ah, we'll go one micro. आपके साथ एक बार आप समझा रहे थे कि ये जब ये स्विंग आई थी लंबी तो मिड पैन को टच करके वो ज़्यादा सेकंड को मैं मिस किया ना, तो वो तो दोबारा ऊपर चली गई. तो वी हैव टू वेट 40 पॉइंट. आपने ये बोला Yes, yes. कि एटलीस्ट 40 पॉइंट्स स्विंग आए उसके बाद तक मिड पैन को छोड़ना है. Correct. So no, generally what I was explaining was this. So there is some people like to do overbought, oversold trade. Okay. So Nasdaq, because of the volatility, there is not too many trades. So one trade, of course, that everybody here prefers is area trade. Area पे आएगी, sell करेंगे या buy. Right? There is another opportunity for you to trade on 30-20 MNQ or NQ on a trade called overbought, oversold, which works with RSI. So this is a type of trade. So generally I'm watching if there's a huge swing. Let's say 35 points. I'm giving वो लिखा आता है, right? So we are hoping that after that swing, it will give us a bit of a retracer, right? And if this is called an overbought trade, and this will get to, let's say, 98% overbought. So 98% overbought. You follow कर रही हैं? अच्छा ठीक है. Swing आई 35 swing. 98% got overbought. We are hoping it will give us this retrace. This is those 5 points, 10 points to make that, right? So, and then let's say go to oversold. Goes down 35 points, 98% down. This will be, let's say 2%. Overbought, oversold. Generally, the rule is you can go do a long from here and short from here. No problem, right? But I was talking to another fellow who is using overbought, oversold. Let's look at right now. Market went 29%. Like 29 swing ho gayi na. If you shorted, you made money. This is straight overbought, oversold trade. देखिए आपने overbought हुई, आपने sell किया, आपने पैसे बना लिए. So the swing happened like this, or happens like this. Overbought, oversold. A lot of times what has happened is if the swing keeps going 30, 35, 40, 50, 70 points, severe overbought. One of the friends that I talked to, he said he's not taking this trade. He's not taking a overbought trade.
He's waiting for the price to touch the mid-band, okay? It goes up a little bit more, then he will sell from here after this value has crossed. Same idea. If the price has come down, he will not buy from there, wait for the mid-band, go down, and then attempt it in the second term. Because, so that's the overbought, that's an oversold. So this is one trade people are, I don't know. More or less like the Second swing. Because he says, that's what I'm trying to understand. Yes, I yes. moved up when I tried that. yeah, so, but look at what happened right now. If you're watching 30-20, But this was this trade. yes. So it went overbought, it, But this one went straight down. yes, exactly. So it did overbought, oversold, overbought, oversold. So either you pick this method or this method. According to him, he says, I have failed more, I have to do more average here. Whenever I'm waiting for the price, I'm skipping and I'm waiting for the price to go break this. Because what will happen is this. Other day, remember the 70-point swing we got? 70. He missed that trade. He says, I'm not selling. He waited here, let the price go even higher, and then sold from here. Then he's like, my risk is much less because I know if it keeps climbing. So he will wait for one mid-band and then, so look, another oversold trade, right? It's no problem. You got your points. But let's say if it touches, look, it touched mid-band, came down. So he would take this trade now. Yes, exactly. On 30-20 only though. Nothing to do with 15-10. But look, your chances are much higher now compared to a second swing. So, Is he still taking 5-10 points? Or is no, he- 5 points, still 5 points. Again, there's no change in overbought, oversold. We're only after 5 points. But he says, I want to make sure that it's because what happens is, yes, it's a 99%. But on certain software that he watches on TradingView, that's still 94%. Right. Because they're calculating swing to be a little longer. So he's like, I'm going to go and attempt it a little bit longer. I will wait for overbought, wait for the mid-band, let it go high. If it crosses then, that's my entry. So the word is called, I think, pullback or breakout. So he's waiting for, so if this was the price, 1, and if this is the price 70, because this is a price 70-point swing. He's like, I want to make sure after the swing, if it, because what is happening is some people are entering at 50, some are entering at 60, some are entering at 70, like, you know, because of course the higher the peak, the longer the ride down, right? So Exactly. ये तो तानिया साहब बोलते हैं swing retrace extension. So he is going through the extension. He is waiting for the, he's like, I'm going to miss the retrace because mostly I've seen, so this is, I'm like, great, let's analyze. So Saturday again we will sit and we're like, Technically, it's the first extension and then. yes, exactly. Because look, swing, retrace, extension, right? Yeah. If there is no extension, that becomes the swing, Swing. right? So that means he has more chances every time compared to, so that's a cool, Same like, thing happens with S&P. S&P as well. वो हम diversion कहते थे उसको. Exactly. So he's taking a diversion trade along with overbought. So I have Mr. Hashmi. He does a completely different trade. Watch. He's like, I'm going to. He keeps watching previous swing. So let's say this is a higher high, right? And price came down. The moment it breaks this, you have a line. He will go long from here. So if you see every swing has on Nasdaq has a line going through. Every swing you can watch. There is a line, dotted line going across. Look at right now. 20327 has a line. He is waiting for the price to break 37 and then will go long for maybe 5 points, 2 to 5 points. And then if it's coming down to lower low, goes back up, he's like, I will wait for the price to break this. So it's one of those things more and more that people have figured out hundreds of ways to trade Nasdaq. Yes. एक अगर वो जो सिचुएशन है नहीं पूरी हुई राइट वो ऊपर स्विंग इसके किया इनका वो नीचे भी स्विंग
फिर दोबारा ना उस सिनेरियो का इंतजार करना नहीं, ये तो ख़त्म हो गया ना, हो गया हो फिर दोबारा फिर दोबारा लाइक आपने इतनी बड़ी, so every overbought he is waiting for an extension. You are right, जब भी huh? वो हुआ नहीं ना तो वो Yes. पहले वो रिवर्सल बन के फिर चला गया सेकंड टाइम फिर ऐसी सिचुएशन में जो आना So look at this swing. Swing was 21 points, right? Retrace came, so he wouldn't have taken this oversold trade. He would take the next swing trade and then go up. So he's combining overbought, oversold with a divergence, because that's a trade together. So again, the chances of probability of going price back up are higher, and they're higher here. That actually makes a lot of sense. Sorry, makes sense? It makes a lot of sense. Yes. So, You're but gonna get less chances, but you're going to be safer. safer. So he's like, how do I reduce my probability of going? Because what was happening for a few months, he had to do an average. Sold 70, maybe he entered 62. Maybe he had kind of, remember 70-80 point jab chad jaye, and he was like, उस दिन हम 40 पॉइंट पे एंटर हुए थे, yeah, 70 पे वो 70 पे गई ना, तो हमें एवरेज करके नहीं चला। वो कहता है यार छोड़ दो, 70 चढ़ने दो, मिड बैंड आके 70 क्रॉस करेगी फिर देखेंगे। But he maybe he's missing 8 trades or 9, I don't know, right? How many trades are like this was a great overbought, oversold, but mid band works for ES again. That was a gap trade. Any desk thing, any desk. Yes. माइनस 13 लिखे हैं, माइनस 13 बची ना ओके मैं तो 17 लिखे हैं। Give me 1 minute, sir. 1 minute. प्लस हो गया Let me just close this. 553 830 193 एक्सेप्ट करेंगे। नहीं आई नो, मैं यही कह रहा हूँ कि वी गो टू सिग्नेचर्स and we make the payment which one you pass, Tradeovate. So let's click on Tradeovate and let's do the $85 for lifetime fee. So एक सेकंड में डबल चेक कर लूँ आपने कौन सा पास किया। सो यू passed Tradeovate, गुड, ये पे कर देंगे। What does Scott says? They're offering a refund.
माया को नहीं सॉरी चार्ट का माया सर चार्ट के लिए अंदर दिखाना है। दोबारा फिर 15 मिनट्स नहीं नहीं आपके पास एपेक्स जो है, हाँ हाँ तो वो पहले अब ये मैं देखता हूँ। लॉग इन करें, आप लॉग इन करें पहले। मैं आपकी बात नहीं नहीं ये इसका तो ये तो वो तो कह रहा है पासवर्ड रॉन्ग है। नहीं नहीं आप जाएं उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके करें। Back up to that area again. Again overbought, oversold, overbought. I just asked him a question. I said, he wrote an interesting thing. He said he's skipping the longer swings. If the swing is actually a small swing, he's actually taking, because he just saw me online and replied, he's like, when the swing goes a lot higher, then I'm taking, because normally look, in a normal swing, बड़ी swing में वो कह रहा है मैं skip कर रहा हूँ कि 50-60, बस प्रेशर बहुत आ रहा है ना कि वो कह रहा है मैं छोटी स्विंग ये रखें, ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्रॉपर चल रहा है ना। सो आई एम लाइक अगेन मुझे फिर कंफ्यूज कर दिया कि मैं लू कौन सी वाली लूँ भाई। So, ये हो सकता है ना, वो सोच रहा हो भी वो जो लंबी स्विंग है, हाँ। वो इंस्टीट्यूशन की ना हो ना, उनका पता नहीं ना। नहीं देखिए अभी ये स्विंग्स आई हैं ना, 23 की स्विंग अच्छी आई, फिर 32 की स्विंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू जज how long is going to be the swing? That's where the $1 million question is. If you know the swing, then that's where you would put in like 100 lots and sell. लेकिन सर मेरे से बंदा इसने ओवरबॉट वो छोड़ ही दिया फंसने की वजह से। आई कैन स्टिल वेट कि जब मिड बैंड पे आए ऊपर जाए तो फिर कर, फिर दोबारा कर। आपका चल रहा है सारा कुछ ठीक है। मैं अभी मैं एपेक्स चेक करता हूँ, एक सेकंड। Like this was 23 up, 32 down, 20 up, 10 down, again 13 up. 330 है ना, वही बना हुआ है। बड़ा स्ट्रांग बन गया। बना हुआ है, वही से पैसा आ रहा है। जब आपको ईमेल आ जाएगी ना एपेक्स की पीए की, फिर यहाँ पर पीए नजर आ जाएगा। Then you're good. That's it, all done. हाँ जी चलें, एनी डस्ट हैं। अगर आप 499 पर भी बंद कर देती ना ये, अच्छा अच्छा, लेकिन रियल वाला तो रिकवर हो गया ना सारा आपका। गुड गुड। मैं आपको रियल एफटीएमओ का फंडा बताऊंगा, छोटी ट्रेड ले, 2-3 ना ले, 2-3 लोगे वहीं पे चला जाएगा लॉट साइज। क्योंकि मैं से एक हफ्ता पहले भी मैं 300-400 बना रही थे ना, तो वही जो ही मैं लाइव पे आई तो मेरा उसी 2 दिन एक्चुअली मार्केट सही नहीं थी, मेरी मिस्टेक। मार्केट बैड थी, कल ही उठ गया ना, कल बैड मार्केट वाले दिन एफटीएमओ मैंने भी दिए हैं कल। परसों मैंने बना दिए। हाँ परसों 300 किए, कल नहीं परसों 400 की तरह निकल गई थी, और आज कल मैंने देखा ही नहीं। अभी मेरे पैसे थे थोड़े से, लेकिन एक दिन का 500 So let me break 330. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4. Today would be day 5. अभी फिर क्या करें यार? He's trying to pacify people whose payouts he is denied. So he's trying to pacify people.
announcements. क्या रीजन बताया था सर लास्ट वीक $30 ये भी $30 दो बार चार्जिंग नो जस्ट बिकॉज आप अपनी जाके पेमेंट हिस्ट्री में जाके देख लें ना खोल के कि क्या रीज़न थी। पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करें, वो आपको नीचे जाके पूरी सारी बताएंगे एक एक कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी। हैं नहीं, लेकिन पहले जाके देखिए, मे बी आपके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे। और ये लेजेंड का मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मैं इसमें एप्लीकेशन नहीं कर रहा, तो अभी वो जो फीड आ रही है ट्रेडर की वो 10 मिनट डिलेड आएगी क्योंकि उसका नहीं, आपकी लेजेंड्स इफ इट्स नॉट ब्लोन इट विल वर्क। नहीं लेजेंड मैंने बंद ही कर दिया। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, फिर आपको कोई अकाउंट तो चाहिए ना। फिर वो नहीं, फिर खाली FTT तो नहीं कनेक्ट होता निंजा से, तो आपको या एपेक्स चाहिए या लेजेंड चाहिए। ट्रेडोवेट की फीड लेनी है, उसके चार्जेस अलग से देंगे। यस, वो $60 की है, लेकिन सस्ता ये है कि एपेक्स की फीड ले लें $29 की फीड ही लेनी है ना सिर्फ, तो $29 की एपेक्स की फीड लें, सबसे सस्ती है। हाँ, डेटा आपने प्राइस ही देखनी है ना। या जस्ट गो ऑन एपेक्स, गेट वन अकाउंट द चीपेस्ट 25 एंड दैट्स इट। हाँ, आपका चार्ट चलने शुरू हो जाएगा। नंबर बताओ। डेमो भी आपका एक्टिव होने 15 दिन चलता है। 194 इसके बाद अगर आप कोई अकाउंट नहीं देते तो आपका 451426 एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ये भी आपका रेगुलर ये लाइव चल रहा है, वो तो डिलीट होगा। लेजेंड सर GFF का है ना, लेजेंड GFF का इसीलिए आपका फीड आ रही है ना। लेकिन लेजेंड तो लो है, जो तो ट्रेड करना है, ये ट्रेड नहीं करना फिर तो एपेक्स सस्ता है ना। हाँ, लेजेंड इज 50, एपेक्स इज 29। 29 वो ठीक है। एनी डस्ट में करा देता हूँ आपके एग्रीमेंट। ये न्यू चैलेंज 10,000 FTMO स्विंग आपका मेटा 5 था, मेटा 4 एंड डन। नंबर दीजिए। हाँ जी 1734 1738 940 540385। सॉरी, दोबारा पूछिएगा। हाँ जी 1734 940 एक्सेप्ट करें। वो गलती करते कितना मिला सर? कुछ किया ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ 50 ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵੜਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਗਈ ਦੇ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, अपना थोड़ा यार है या बात झूठ Which one? No, कौन सा एक ईमेल आपके बहुत हैं। नहीं यही वाला है जो आपने मेरी गलती को मैं दे ज़्यादा जाना, मैं बना ऊपर नाम में थोड़ा चेंज देने लगे हम कर दें। नहीं मैं ऊपर बड़े हो जाते हैं आज तक ठीक कर दे। मैं दे ज़्यादा जाना, जो दे मैं बड़ा रोज लेना। कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लें अपने लिए। 31 पॉइंट स्विंग। ਵੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 100% ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 34 पॉइंट स्विंग, 35 पॉइंट स्विंग। 90% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਨ ਰੇਟ 90%। ਲੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। जी नहीं, मैं आता हूँ। 170 नहीं, मैं उधर आता हूँ, मैं इनका बस कर। ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ 300 ਕਵਰ ਹੋ
So 10 minutes में आपको यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा. I have logged out. क्योंकि मैं तो लेनी है एंट्री, मैं बाकी और देखिए 36 पॉइंट स्विंग आई है. देखते हैं ये स्विंग आप पिछला भी काउंट करेंगे. नहीं लेकिन वो भी तो कर रहा हूँ, लेकिन अब इतना ओवरबॉट हो गया है. 96 राहुल जी दोबारा it's at 99 point. Yeah, so in his case, So he will not take the first No. drop. He will wait for the extension. and see, Then he will then see. दिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन क्योंकि पहले से मिड बैंड को टच कर चुकी है. 3 मिड बैंड गई हैं वैसे. हाँ तो वही मतलब इट्स ऑलरेडी एन एक्सटेंशन. कंटिन्यू टू प्लान मैं साइड पे आया ना Yes. माइनस होने साइड ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? तो आगे सर और किधर होना है ये वाली जो कैंसिल इनको डिलीट कर सकते हैं? नहीं. नहीं कर सकते दोबारा. You see, it tested the mid bank again. So मैं वेट कर रहा हूँ again, because he's waiting for this mid band correction. अभी फिर बाइंग आ गई Now you can probably attempt. Yes. Now on the next. But let's see if it has broken the 360. So there's more probability for you to drop here than it was a previous swing. यही सिर्फ देखना है अपने सीखना है Now he is already in short most likely. So I took the short as well. मैंने भी शॉट किया And look, you make money. But sir, it did touch quite a few mid It's okay. वो सिर्फ पिछले छोड़ के वो बड़ी swing देख रहा है ना. Right. The more chances that you will get, because it's a divergence slash overbought trade together mix, with more probability of falling than the first swing. But the RSI divergence, not the MACD. Yes, exactly. So there you go. You have a better chance on falling the second swing than the first swing. Because it goes up, makes a divergent, comes down, and then you get your five. So rather than entering early, you let it, because if it mid-band breaks, yeah, you're like, oh my God, I missed that trade. Right. But on the second attempt, it's a little bit safer. So he's reducing the probability. So he waited for the price to cross 360, and then he's like, Sir, another scenario, which I'm never going to do, I'm not that aggressive. No. But if you enter at the first RSI peak, yes. and then it touches the mid-band, goes up again, you can probably short again over there. Yeah, I know, but that's averaging. Right. But what happens is, if it has more pressure, touch it, and then you're like, my God. So again, पता लगे कि second swing भी piece की चली जाए. Right. So at least seconds. अब देखे ना, वो फिर थोड़ी सी touch हुई, वो फिर ऊपर चली गई. But it gave us a bit of a retrace, right? Let's see if it gives us. नहीं नहीं Now let it wait for. ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਮ ਆ ਕਿੰਨੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਲੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 12-15 ਡਾਲਰ ਪਰ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ Check your email, sir, and verify. Because remember, it's coming from 306 all the way to 364. It's a 64-point swing, right? आगे नीचे नीचे Nope. Again, touch mid-band, went back up. धक्का लगा ये बड़ी पता लगे 400 से वापस आए. वहीं पे चली जाएगी टेंशन नहीं लेना पेमेंट कर दो यार. हो गया जी. कर दो. मैं लॉग इन करूँ. अभी प्लस ही बना रही है नहीं आ रहा हूँ एरिया आ रहा है आपका. ऊपर ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ नहीं, ਵਾ ਵੀ ਜਾ मैंने करी नहीं अभी पेमेंट कर रहा हूँ. पेमेंट नहीं की अभी. हाँ कर रहे हैं. ये आपको लिंक आया है ना ईमेल में. हाँ जी वो एक्टिवेट मैंने. नहीं ठीक है, अभी मैं उसकी सेट करता हूँ. सर ये 306 से आ रही है मेरा ख्याल अगर अब R1 पे गई तो इस टाइम R1 सेफ नहीं होगा. R1 सेफ होना चाहिए. और यही पॉइंट से ना सभी सेल में बैठते हैं तो अब उसका स्टॉप लॉस लेने ऊपर जाना है इसने सब क्योंकि यही से पीछे 7 बार चली गई है नीचे 70 से यहाँ से ये 550 पे भी जा सकती है.
सर अब ये ना कि आत्मा का माइंड बनाया था नहीं देखें, याद रखें, वो जो होती है ना, वो चढ़ते चढ़ते कहाँ चली जाती है. So I'm waiting for 440 to be exact, because remember 427 तो हो चुका है ना आपका. again that's your public statement. No, because I can average myself out of. रात को मैं FTT में 5 माइक्रो करके सो गया. नहीं सेल. मैंने कहा टेस्ला की अर्निंग कम आएगी, मुझे क्या पता क्या नहीं. सुबह उठाओ ना तो प्राइस थी 420, मैं था 294 पे शॉर्ट. अब आप सिर्फ हिसाब लगाएं कि मेरा हिसाब, मैं सुबह गाड़ी में देख रहा था कि प्राइस कहाँ जानी है. सो 294 and it's $10 and it's 420. 420 minus 294 is 126 times 10. I'm negative $1,260. Right. I log on to my computer. When the price hits R1, I take a short of 20 micros. So 5 पहले थे, 20 पूरे किए. 25 micro बन गए 2.5 mini. Right? You know my average came to 387. मार्केट ओपन करते ही मुझे 0 पे निकाल दिया. Right? So एवरेज जितनी दूर करनी है बेटर है. अदरवाइज एवरेज के रिस्क भी है ना, अकाउंट भी खत्म है. अब 20 पॉइंट ऊपर चलेगी तो वो खत्म भी ले जाएगी ना. ये भी सोच के आपने तो पहले 5 माइक्रो से स्टार्ट किया क्योंकि 7500 का थ्रेशोल्ड है, कहाँ तक पहुँचेंगे. और then I looked at because I was waiting for the areas to be posted. I'm like, from which point will I do an average? And the areas came 440 to 420. I'm like, now we have it at R2, and then I will take another lot. So because next game plan was a bit higher. So now it's not climbing as high as pressure is kind of done. ये देखें ना, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता लगे ना कि हाउ टू डू दिस. सो गो टू डैशबोर्ड. ये लिखा हुआ है पेमेंट हिस्ट्री, राइट हियर, पेमेंट हिस्ट्री राइट हियर. सो एट द पेमेंट हिस्ट्री दे विल टेल यू वेयर डिड यू पे. You paid $85 today, then you paid $29 on it. नहीं वो तो ऑटोमेटिकली आपने लगा हुआ है ना, तो उसने ऑटोमेटिकली कार चार्ज किया है इधर. फिर 12 अक्टूबर ये आपकी सारी पेमेंट्स जा रही हैं. 12 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 2 पेमेंट गई. नहीं गई है ना, उसने पहले 12 अक्टूबर को एक अकाउंट रिन्यू किया. आपके अकाउंट भी तो है ना, ये देखें अकाउंट कितने हैं आपके पास. नहीं, आपके पास ये भी अकाउंट है और ये भी अकाउंट. एक तो पीए हो गया आप, तो उसने 2 चार्जेस किए ना. अच्छा, दोनों का रिन्यू भी तो करना था ना. उसने 12 अक्टूबर को ये रिन्यू किया. अच्छा, पीए अब पीए के ख़त्म हो गया. अब ये अगले दफ़ा एक फ़ीस आएगी क्योंकि आपके पास 2 अकाउंट. एवरी मंथ 1 fee which is $29. Oh, what a beautiful trade. Did I take anything? Oh, नहीं मैंने तो मैंने लिया हुआ था, मैंने सिर्फ प्रॉफिट कैश किया. कम लिया ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है. So you see the power of waiting. Now it will go back up, no problem. So even if it's coming down, let it test the mid-band, let it see. इतना फर्क था for me to walk over there and come back and the market fell. पानी लेने गया हूँ, $70 प्लस छोड़ के 110 माइनस देखा तो बस. इससे फ्यूचर नैस्डैक ना आपको वॉशरूम जाने देती है ना आपको खाना खाने देती है. लॉक स्क्रीन पे हो गया. बहुत महंगा पानी पिया आपने. फिर ले लिया. पे कर दे. पैसा थोड़ा छोड़ूंगा. 110 ऊपर भी है. वो कह रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग हियर. 51 ले लिए. ऐसे भी बन बंदे यार, जितनी गलती करेंगे इतनी ऐसे भी बन जाते हैं. कल एक तरफ ही हुई बड़ी थी ना, एक तरफ. पहली ट्रेड में सर सेल लगाया, इसमें पैसा लिया. पहली ट्रेड लिया सुबह की सेल. Okay, let me try again one more time. This is not. Okay sir, thank you. No problem.
I coded a lot to see if I can pick mid-band of Nasdaq. बट इस ट्रेड कर रहे हैं Too fast. Because every mid-band gives you 5 points. But it's so damn fast that, you know. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੱਢੀ ਲਈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰ ਹੋਇਆ I'm writing one alert where it's going to do a mid-band trade of Nasdaq using MACDs. And if it crosses, then trying to automate that. सर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, एक सेकंड मुझे ना ब्राउज़र बदलने दें. So would that be gap trade or something? That would be a gap trade. ये ट्राई करें. I think the whole day the price has been 380, 330, 305. Yeah. Not much move. Scott is saying our scripts are running non-stop. कहाँ ले गए ये What is the issue, sir? Even here, except .gs is not correctly loading. This is annoying. The charts are running fine. No, let me see. FTT is saying you can take a refund if you don't like it, but नहीं अगर आपका पे आउट डिनाई हुआ है ना तो यू कैन गेट अ रिफंड. मेरा डिनाई हुआ है ना कि मेरे इनफ डेज नहीं थे, सो देयर लाइक इफ यू वांट टू टेक अ रिफंड, आई सेड नो, आई विल मेक. You worked so hard on it. या आई वर्क सो रिफंड मतलब कॉस्टिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट $300. मैंने कहा यार इतना मेहनत की है. दूसरा कार्ड डाल के देखो. Huh? No, it's a problem with their website right now because the JS format is give me a second. What is GS? It's a JavaScript. Let me check right now. Dashboard. $353 again. Can you try this? again wait 344 सही है ये yes कर रहे हैं हाँ जी. yes का different है ना I know that. yes safe नहीं, मैं सिर्फ आवाज़ ही ताकि सुन रहे हैं कारण आपके दिमाग में. yes safe है पॉसिबल नहीं होगी नहीं बिगिनर में आपको लो जी इस जी जी. Is this it? Yeah. Okay, one second. अभी 1 मिनट में कैंडल आएगी नहीं वो दूसरी जाएगी Can you open your email? I want to send this email to you to see if you can do this from your phone. This link, I want to email you. सब मेरे फ़ोन पे जो ईमेल आई है नहीं ये जो लिंक है ना ये मैं आपको ईमेल करना चाह रहा हूँ. ओके तो आपको क्या भेजना
सिर्फ ईमेल खोल दें यहाँ पर अपना ब्राउज़र। कर दें। अपना ईमेल टाइप करें जो आप फ़ोन से भी खोल सकें, कोई भी हो, जो आप फ़ोन से एक्सेस कर लें। मैं दोनों ही कर सकता हूँ। आप अपने फ़ोन पे ईमेल दें। Let me see how many mid-bands work today on ES. Going up or going down? One mid-band going up, two mid-band going up, one mid-band going down, two mid-band going down, so 4 mid-bands. कई दफ़ा यहाँ देख के लग रहा था मिड बैंड काम नहीं किया, लेकिन अगर रियल टाइम पे देख रही होती तो कैंडल ब्लैक कैंडल बनने से पहले आपकी 1-2 पॉइंट दे चुकी होती है। बट इतना फास्ट चल तो इस लिंक पे पेमेंट हैं? लिंक आ गया अभी। हाँ, उस पर पेमेंट करने की कोशिश करें। $29 की पेमेंट हो गई। मतलब सोच रहे हैं थोड़ा फोन उस लिंक पे क्लिक करें। तो आपके कितने बने गोल्ड में? आपने लॉन्ग किया था रात को, आपने कहा ना FTMO नहीं, और डैमो में इन्होंने नैस्डैक में लॉन्ग कर दिया। 200 लॉट, 5 लॉट, 200 पॉइंट आपके 200 पॉइंट। हाँ, 5-50 के तो कितना डेमो तो निकल गया हो। डैमो निकाल दिया। सी देखे, एक ट्रेडर शॉर्ट था कि उसको लगा टेस्ला, एक ट्रेडर लॉन्ग था, तो मेरा पॉकेट उधर चला गया। राइट, सो दैट्स ऑल इट हैपेंस। वन ट्रेडर इज ऑलवेज रॉन्ग। दिस इज द टाइम इट ट्रैप्स यू। मैंने वही बोला, अभी कुछ नहीं करना, 440 के ऊपर देखेंगे और 200 से नीचे देखेंगे। And honestly, I am not doing anything. No trade on any account whatsoever. Apex, FTT, Perdia, Tradeify, FTMO, all 5 companies. Same error? JavaScript. Okay, let me talk to them online on through the text. Okay, maybe you can try tomorrow if you want to. Okay. अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला वो 50 का है ना लेजेंड, तो ये $20 बचते हैं आपके। जस्ट फीड ही देखना है। FTT का चांस है। सर मैं आपके सामने हूँ, सबसे क्यू में आगे हूँ, मेरे से भी आगे 4 लड़के और हैं। FTT का चांस तो है, लेकिन नहीं, वो निंजा में कह रहे हैं। Oh. निंजा में। they have a lot of struggles right now. इसके रिव्यू ज़्यादा बढ़िया ट्रेडिफाई के जो आप सर ये रिव्यूज तो FTT के मैं रिव्यूज पढ़ा था, ऐसे लग रहा था उससे बेहतर कंपनी कोई नहीं, वो सारे पेड रिव्यूज ही होते हैं। नहीं, मैं खुद की अच्छा प्रॉब्लम हमें FTT के बारे में ना I found out quite late because I don't want to push anything under his umbrella until we are sure. So we did back and forth because they've been running for a long time. We jumped in around August and I said go straight to PA. I got it. 4 of us decided to lead it. We led, and I think it's just weight of the people coming on board and abusing the system came too much, right? So
Let's see what happens to Tradeify. I'm trading 7 accounts at a $200 a day. Okay, all I have to do is get to 7,500, same as so 250 a day, 30 days. 30 days we'll find out if Tradeify does something. So they have a minimum target, $100 a day, which I'm doing. And what else? That's it. And 375 is okay, but not for amateurs. no, 375 is difficult for beginners Yeah. a day. Yeah, So then you should do with that's why we brought in FTT Rally. 62 is very easy. 62 is possible. But only issue is now they want you to make not 1,500, 3,000. And then they will give you the money. that's it. The issue with Rally, for me at least, I'm not doing any ES on Rally because the threshold is only 1250. And I don't want to do micros on ES because micros on ES Too is slow. Like, I would rather sleep. नहीं static account है महंगा है. Static is 50. I think it's almost $90. But it's like Legends. Legend is static account, right? So what does it mean? No life threshold? No life threshold. So, but it's expensive. So I got the prices from Greg last night. How much did he say he's gonna charge for Legends? Give me a second. One-time fees for Legends. So 25,000 would be 150, just like Apex. And highest account they have is 250,000. So he'll charge 350 USD. So anybody one-time fee. So Oh, it's one time. it's a one-time. No, Legends PA is not monthly. Because I was under the impression. One-time PA one-time है जी. Legend का EA monthly है, PA तो one-time है हमेशा. Yes. Legends PA is $150 one time. So that's not bad at all. Because I was thinking something totally different. I'm like, I would never. नहीं होता मेरा वो payout नहीं होता तो मैं तो उनको 6-7 हज़ार दे दूँगा 20 अकाउंट में. सर ये जो है टॉप स्टेप नहीं कैसा Yeah, they're all the same. टॉप स्टेप इसके ट्रेडिंग So सारे ही हैं करने आपने. नहीं होता मैं आपको 15 और भी दे देता हूँ. मसला ये कि cost to benefit ratio, right? Top Step has, I think it's more expensive because in terms of evaluation and activation fee. So Legends is $50 EA and 150 PA. So normal trader for $200 they can get $1,500. Next best thing is FTT. Next best thing is Tradeify. Apex we are not pushing because new trader, he came in, he knows how to buy and sell. If I give him Apex, he's gonna say, man, I saw 100, I closed at 50, why I have minus 50? So I have to back and forth, I have to explain they have a new rule. So no more new trader, no more Apex. Veteran trader, yes, they can still do Apex. I still do Apex, slowly, but not recommended. I do Apex only with ATM strategy. Oh. जितना नजर आया वो मिल गया. Yes. पेमेंट हो गई आपकी? नहीं हुई ना? फिर कहाँ? सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1500 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਹੋ ਜਾਵੇ 30
जो ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥਲੀ राकेश सर ये कनेक्ट नहीं कर रहा एनी रस दीजिए। 10 एक सेकेंड। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 1500 ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1500 ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਦਾ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1500 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ $50 ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ $50 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1500 ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨ ਟਾਈਮ 150 ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 150 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ 1500 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ सॉरी नंबर बताइएगा। एक्सेप्ट कीजिएगा। रूल्स फॉलो करते हैं मैंने लेंदा है कि 20% है 15 का 20% कितना बनता है 300 बनता है 300 बनता है 0 का 300 तो ज़्यादा नहीं बना सकते मतलब रूल्स फॉलो करना 300 बनता है ये रूल है ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ $2 ਬਣਾਓ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ Where are their accounts? ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਿਲਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ 15 ਦਿਨ 15 ਮੈਨੂੰ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ 25000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ हो गया। 25000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ 10% ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੱਖਣਗੇ 90 ਕੰਮ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਨੀ $50 Just say height. ਕੰਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚ 15 ਤੋਂ ਬਣਾ और जी आपका ठीक जा रहा है? आज थोड़ा because I was up down वाला हमेशा एक्सपेरिमेंट सिम में होते हैं। सिम में होता है एक्सपेरिमेंट सारे सिम में होते हैं। But once you're done Apex, let's say if you manage to pass or fail, switch to Legends. Because the idea with Legends is, it's much easier. I don't know if I explained. Okay. So since I have time, I'm not trading. It is the same method like Apex. You go EA, you go PA, then you go get a payout. So Legends maybe can they do that hedging in no. Legends is GFF, so they don't let you do hedging. So the benefit of Legends over Apex is following. So you have EA, then you have PA, and then you have payout. Okay? So their $25,000 exam costs you $50. So we used to pay like $30. So it's a little bit okay. How much money you have to make? $1,500. the same. Yeah. How much money you can lose? $1,500. Same thing. However, they want you to make this in 7 days. So they still have the original rule. Don't make it in 1 day, right? Number 2. 7 days out of that
one billing cycle, right? Okay. Next thing, they want you to not make more than 450 a day. So you have a maximum limit. Just like EA, PA is the same. How much is a PA? $150 one time. One time. But this is per month, right? But again, in PA, you have to make 1,500, and you cannot lose 1,500. So far, so okay. And then they want you to trade 10 days instead of 7. Same idea, don't make 450. This is a normal test for everybody. Here's the biggest change why we are not doing Apex anymore. Let's look at a trade. I'm going to write here 25,000 and I'm going to write here 1,500. Right? Okay. That's how your ledger starts, right? Threshold, right? Okay. Now here I will explain legends, and here I will explain Apex, because then you have a full comparison on Apex. So let's go EA, let's go PA. It's a 25,000, of course, and it's a 25,000. How much they charge you? $30, right? How much is the lifetime right now? Fee is 85, but it can change any time. So, but let's compare as of today. How much you have to make? 1,500. How much you can lose? 1,500. Same 50. They want you to go 1,600. They want you to not lose 1,500. So we are same page. You can do EA in 1 day, but PA you should trade 8 days because they made the rule. Of course, EA you can infinite. You can finish it in 1 day, but PA don't make more than 450 a day. The big, and again, their legend starts with this. Their ledger 25,000 and 1,500. So this 15 cannot go to 0, and this must go to 26,500. Same 0 and 26,500. This is now one-on-one comparison between Apex and Legends. So Apex, Legends. The big difference is as follows. Let's take a trade. Both ways. We take a trade, we lost $100. Okay, happens. Let's say 150 you lost. Yeah. 150. It will write the same way 150. Whether you did it on Legends or Apex, right? Correct. We make back $200. Okay, we made back 200. So of course you got your 200. And just like Apex, they will only give you your maximum threshold. So you made 200, 150. So far, so good. Why Legends beats Apex in this is, you take a trade, let's say 59.01. You went long. And the price went to 59.06. How much profit you make? 250. And now this is the major difference. Sorry guys, I'm in a trade right now. Yeah, ready बैठे हैं. नहीं सर नहीं अभी और नीचे जाना S2 क्योंकि अगर प्रेशर R1 से आ रही है तो पहले 305 से गुजर चुकी है. So now in Legends, how would this trade be? Let's say you close your trade at 59.02. Your profit is $50, right? Right? Same thing here. How would Legend write this? It's like this. I gave you $50. Your threshold is maximum. I gave you 0. How does Apex write this in their ledger? They gave you $50. However, they deducted minus $200 from your because it. So for the little bit of a money, I like to protect my threshold. That's a major benefit. The word is called end of the day. They will take care of their threshold not after every trade. They care about every trade. So
majority of the people will question me, why did I lose this $200 even though I made 50? It's because You didn't close it, right? But in Legends, you have no stress. You don't have a stress, and you're like, all right. So technically, in Legends, what you See is what you make. exactly. Unlike the threshold deduction. Correct. Thank you. No problem. So that is why every new person we are pushing Legends, because a new trader comes in. This is how they will trade their own account, right? Correct. They're like, oh, I made money, I lost money, but with the Apex, they are like, I'm now tracking one more thing. It's like juggling. What is my threshold? Right? What a beautiful trade down. 370 से 270. शॉर्ट किया था, किसी ने किया हो? आपने किया जी, कंग्रेचुलेशन. ठीक है, कोई 50 तो आए हैं ना जेब में. अच्छा, अब ये तो मेरा नहीं है मसला. 10 पॉइंट थोड़ा सा एरिया दिया उसको. I don't know if I'm in an सर जाने दें, S2 को जाने दें. सारे लोगों ने कैश करना है. हाई टू गो, लो है, लॉन्ग में नहीं जाना मैंने, और आपको भी रेकमेंड नहीं कर रहा, बट यू गाइस कैन डिसाइड. एरिया इज डन. सर अभी नहीं, मैं नहीं करूँगा. ओके 27 हाई टू गो, लो वुड बी माई डिप. अगेन एरिया चल गया 270. सर मैं बैठे गाड़ी चला रहा था 100. पहले हमने 120 लिया ना, 120 से भी 20 पॉइंट नीचे गई, 40 पॉइंट. 20,079 and I'm like, great. So when it went to 294, then I shorted. I'm like, this is 294. It's coming from 20,079. 200 पॉइंट आ गई है, सेल कर दो. पता लगे वो 200 से ऊपर 425 पे चले गए. हाँ 300 पर जाएगी ये शाम तक, वेट करो थोड़ा. तो वहीं पे 350 का कहा था मैंने. हाँ 300-350. लेकिन वो जो टेस्ला की अर्निंग है ना, उसने उसको फ्लिप कर दिया. एंड देन इट शॉट अप. इज एनीबॉडी सेलिंग नाउ टेस्ला? एवरीबॉडी इज टेकिंग प्रॉफिट. 19%, 253. माय गॉड. गोल्ड इज 54 से नीचे आया ना. गोल्ड का रोज अभी यही हो रहा है. लेकिन मुझे लगता है किसी दिन वैसे डंप कर देना उन्होंने $200. शाम को डाउन हो जाएगा, रात को फिर 10-20 उठा देंगे. अभी निकल नहीं रहे. 54 और 27. At this time, sometime you wanna feel like कि यार मैं किसी ट्रेड में होता ना तो सारे पैसे बन गए थे. 287. This is my night shift. दिल को तसल्लियां दे रहे हैं 12 बजे से पहले करके नाइट शिफ्ट. Again, उसको पहले देखिए एरिया से आ रही है. एरिया से आ रही है, पहले मिड बैंड टेस्ट कर. यस देन उसको 2000 का फॉर्मूला लगा के आपने लिया था? तो मैंने बोला ये डिप ये ले ली. I don't have the courage to buy when the pressure is down. नहीं 30-20. एक बार चली जाए तो फिर सेल ले जाए. मैं ये डिप खेलता हूँ सर, जैसे 50 पॉइंट 70 पॉइंट की गिरी ना, और डिप में जाना ही जाना है.
99.9. Oh man. ये 100 थोड़े भी वेट्स ट्राई कर 46.310. What a huge swing back up. ये वही वाला काम हो रहा है. तो इससे पहले नीचे भी इसी तरह लेके गया था. यहाँ से अभी सेल कर दो भाई. ऊपर ही ले जा रहे हैं यहाँ सेल कर. Let's test this midband first. काउंट आ गया प्लान. पहले सारे सेल के स्टॉप लॉस पूरे किए, अब बाय के स्टॉप लॉस. 51 point swing. So it went as low as 264. 70 पॉइंट जैसे स्विंग दिया. लेकिन मॉर्निंग में तो 400 नहीं ना तोड़ा अभी. अब 930. ले 6,500 contracts का. 8:30 बजे 425 पे गई थी. 8:30 बजे. नहीं वो 930 सेशन. वो तो नाइट सेशन हुआ ना 428. 8 पे नहीं गई उसके बाद. But remember, why did it bounce from 264? That was night session low. So जब 100 पे इसको 10 सेकंड हो गए गेम. 57 points. वो लंबी स्विंग आई है. वो लंबी स्विंग आगे नीचे लंबी स्विंग आई है ना तो एरिया ले. Oh. टेस्ट को बता देंगे ना इसका. Yeah, it's okay. Now we wait for बड़ी तगड़ी go है. below this midband now. बड़ी लंबी स्विंग आ रही है. जिसने 99.5 पे लिया होगा वो बेचारा वापसिंग का सोच रहा होगा. Just like yesterday, 70 points. लेकिन आज मुझे एरिया से आ रहा था तो थोड़ा आइडिया था. सारी भी ले गई. इतनी गिराई सारी ग्रीन कर दी. 100 कर दी. बहुत देरी में 65 points. इतना पैसा बनाया लेके जा रहे हैं सेल में. 100 पे आने के बाद 13 पॉइंट ऊपर जा चुकी है. जितना बना के लाया वो भाई थे वो सेल में ले जा रहे हैं. आएगी 25 26 ठीक है. लगाना है अभी से वेट बैठा सेल पे. हाँ लेकिन अभी उसके फिलहाल में दिख रहा है. गुड है जितना ही कर दे. नीचे को वेट कर ठीक है. हाँ सॉफ्टवेयर बोल रहा है अभी. सॉफ्टवेयर कहता है मेरा 100 तो पार हो गया. ले यानी 360 पे 660 पे लेगी जितना उन्होंने कमाई नहीं जानी. सॉफ्टवेयर बंद ही हो गया ना. 70 point. 15 मिनट की कैंडल में जो स्पाइक बनी है ना. Beautiful. मैंने लिए थी भाई. मैंने ऊपर निकाल दी भाई. बहुत ज़्यादा चढ़ गई ऊपर. मैं तो 10-20 पॉइंट लेने वाला हूँ.
चल रही है। तो ले गए पूरी की अभी कर लेंगे। Boxes are down at 280 again. आगे मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। उसकी देखते चल जाएंगे। Which market did it take up? Tesla, $40 up, 20% up, almost 18 and a half. बाकी सारी मार्केट तो डाउन है सर। There you go, tested the mid-band, went back up. Another broke the previous high. Still breaking, doesn't want to come down. Better trade. वो ट्रेड है सर। एक सौ 50 मिनट के चार्ट पे ब्रेक बहुत ज़बरदस्त बनी है नीचे या ऊपर की। वो सर बंद हो गया सिस्टम बंद यहीं से गिर जाएंगे फिर इतनी चढ़ के आई हो ना। Let's see. सेल किया कहाँ से? मैंने सेल किया 329 से 330। अभी किया? हाँ अभी आ गया। Better chances of overbought too. Again, 2 out of 2. अब तो डेफिनेटली बंद कर रहा हूँ। अगर जो उसकी एक्सटेंशन अगर आप 1 पॉइंट भी काउंट करें तो उससे भी you made more than 20 points. Yes. Look at the pyramid. I think I'm going to apply that more rather than the first attempt to sell. ये देखा चला? Thank you on our behalf actually. Overbought, waited for mid-band, created divergence, overbought, then sell. Thank you on our behalf actually. He is even listening. He's get, but he says, "Oh, I didn't take it. You took it." So, all right. Because वो जो पीछे swings आ रही थी, वो नहीं ले रहा था ना. So that is better. So don't worry about being an overbought in one swing. Let it test mid-band, make a diversion, come down. मेरा बड़ा मैं बाई में बैठा हुआ था, मेरी बाई निकल गई नीचे से मैंने चली कर दी। आप बाई में थे? हेज कर दी। ओके ऊपर वाली निकल गई, अब सेल में ही ऊपर लगी हुई थी एक बाई, वो निकल गई।
162 से सेल में FD amount 375 वो डिफरेंट कंपनी है लेजेंड और एफडी जो पैसे मिलता टाइम मिलता वो ट्रेडिंग तो निकल जाएगा निकल ज़्यादा कट प्रॉफिट ले रही लंबा प्रॉफिट आना अरे हम सेल आ रही है ना उन्होंने 308 भी चल जानी मैं ले ही नहीं एवरेज की नहीं क्योंकि एवरेज बंद ही नहीं 10 20 पॉइंट 40 गई जो 100 ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ पावर स्टॉक सिस्टम जितने मर्जी बना कर वो तो किसी पैसे मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ अगर नहीं कई कंडीशन होती है तो S&P की करनी ट्रेड में ट्रस्ट करके बेचो ना वो आई नहीं वो तो एक तो ट्रेड बहुत कोई ट्रेड बहुत ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਈ आ गई प्रॉफिट हो गया 50 60 70 65 ये इधर 9 चलो बड़ी स्पीड से आई है ना ले लिया सर $50 है बस किस चीज़ के 375 हाँ वो आ गए वो आपके वो देखें प्राइस देखें हाँ ऑल ऑफ इट केम डाउन पूरी कैंडल वापस आई है जी वापस आई और अब मिड बैंड टेस्ट हो अब मिड बैंड टेस्ट हो रहा है तो अब हमने ओवरसोल्ड लेनी नहीं है पहले मिड बैंड टेस्ट हो जाए डाइवर्जन बन जाए तो मैं तो वो वैसे भी नहीं लेकिन हाँ मैं ओवरसोल्ड का फैन नहीं हूँ अब ओवरबॉट में भी सेकंड स्विंग हाँ अब इमेजिन करें आप ओवरबॉट में बैठे होते ये इमेजिन गुड क्राई So in this case, he wouldn't have taken that trade. But for us, it's yeah, because it's still testing, right? Yep. In a normal case, this is overbought, oversold, right? But in our case, we don't want to. Yeah, but if you're saying. But remember, it's heading towards Not the. reach 99 at that point. Oh, okay. No. So I would not take that trade. I personally would not take that trade. Look, so even though it's a 43-point swing, Yep. gave us 10 points back. जिस दिन आपको माइक्रो और MNQ की पावर समझ आ गई ना, आप सब छोड़ दोगे। आपको जिस स्पीड से वो घूम जाती है ना। गोल्ड करते हुए नींद आने लगती है नहीं पर मैं बीच में जब स्लो डाउन करता हूँ ना अभी भी नीचे ही प्रेशर है तो एक साइड पे जाना हम जैसे जो एरिया का वेट कर रहे हैं वो वैसे मल्टीपल रिस्क देती है 264 what's our next number to watch for 220 I guess I think around 330 maybe everybody will start selling some people who have bought it has to take profit too right because this is insane that you can just what is the price of Tesla right now $39 so people did start to take नहीं सर हमारा सेल तो ऊपर था ना Yes. The area that I'm personally waiting for is give. No. 1 second.
Remember 260 is done, so the next area to watch for is like the 200 level for Nasdaq to think of buying. Because remember yesterday it went to 79. So expected low would be a better support, but आप देखें अगर आपने डबल स्विंग भी ली होती तो वो उसी तरह का काम हुआ है ना जो ऊपर जाते हुए ऊपर जाते हैं तो वही स्विंग डबल रिट्रेस के बाद ऊपर गए वही तो सिर्फ पहली स्विंग मिस कर दें और अगली स्विंग के बाद ले लें अगली स्विंग के बाद मैं लिया था लेकिन नीचे चली गई नहीं लेकिन नहीं गई ना मैं लेकिन मैंने और ले लिया था ओके पिछला लोअर लो तोड़े ओके लेकिन आप ब्रेक इवन में आई होंगी निकल मैंने डेमो पे लिया ठीक है ठीक है ऐसे बता रहे मैं प्रैक्टिस कर रही थी तभी मैं निकली बीच और लेकिन वो 15 नीचे भी चल गई क्योंकि उसको जैसे उसने 282 तोड़ा ना वो जनरली स्विंग कंफर्म हो गई कि डाइवर्जन पहली बार टेस्ट किया ना थोड़ा सा वो देखें उसने आपको 10-12 पॉइंट दिया थे उसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा हिंट दे दूं देखिए पहली स्विंग में 12 पॉइंट की रिट्रेस आ चुकी थी अगर आप देखें 45 के बाद if you look it went down 45 points it did give you like 30 point swing back up to 12 so that kind of was like देखें नीचे जब स्विंग आई है हाँ जी नहीं 282 that no previous where she entered 282 वाली स्विंग 45 पॉइंट आई ना उसने आपको 30 पॉइंट रिट्रेस दे तो दिया था 12 पॉइंट रिट्रेस मिले ना हमें 5 चाहिए थे so that wise will tell you that and the trend did change back to green so I guess what he's talking about a perfect gap trade. yes वो जो अक्सर सर it's बहुत अक्सर बनती है वो आप देखते हैं गैप ट्रेड वहाँ से बन जाती है so but लेकिन उसने आपको दूसरी स्विंग में भी निकाल दिया था राइट so ये चीज दानियों को हमेशा समझाते हैं समझ में नहीं आता क्या चीज? यही जो स्विंग और रिट्रेस और एक्सटेंशन जो है ये देखते हुए समझने लगता है कि इतनी चीजें हैं ना तो आप आज समझ में आ रही है अभी प्रैक्टिस करेंगे no problem. कॉन्फिडेंस गेन करना है 271 please drop the price and it's dropping like a fly 220 मैं नीचे बैठूंगा पर्सनली बड़े अकाउंट्स हैं सारे क्लियर्ड हैं तो मैं 200 पे ये 40 नैस्डैक ने प्रेस दिया ना तो फौरन आ जाना इसके एरिया बड़ा बेहतरीन चला है 11 पॉइंट्स दिए हैं नहीं मैं अभी तक नहीं आया कल कर लेंगे let's see if 35 point swing 6 point let's just see if it tested there you go made a diversion broke previous low let's see let's see बाहर ले आया ऊपर कांटा लगा के wait मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर बना रहा है मेरे पास सॉफ्टवेयर बना आप ले नहीं वो ठीक है लेकिन मैं कुछ और देख रहा था उसने पिछला लोअर तोड़ा है मिड बैंड ग्रीन नहीं किया सो अगेन मोर चांसेस विद द सेकंड स्विंग आप अक्सर कह रहे होते हैं ना वो बोर्ड में कहीं गैप ट्रेड ना बना देंगे हाँ ये गैप बनता है ना दिस इज अ गैप तो वो गैप ट्रेड को इग्नोर कर रहा है एंड लुक लाइक इट वेंट बाय आई एम 99% श्योर ही टुक दिस ट्रेड एंड टुक हिज 5 पॉइंट्स नाउ इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस लेकिन दूसरी स्विंग के बाद
big deal है. Because Marukhji, it actually makes a divergence. Correct. Because the price came down after mid-band, strength did not come down, and the moment it broke previous low, we decided to go long. पूरी मार्केट आपको 320-25 में मिलेगी सर. सर मेरा तो दिल करता है 450 पे जाए, मैं 5 माइक्रो से फेंकूं. एक्सपेक्टेड में चली जाए सर. But I think it's going to come down more to test, because the way it's getting overbought again, quickly got overbought. Again, पिछली swing है 297 की, to like the previous highs. That's a retracement, like those two wicks, mid-band breaks. सर 200 का वेट कर रहा हूँ 200-205 तक लग रहा है. क्योंकि वो आपका H2 है ना. हाँ जी. प्रॉफिट डे है आज, इतना नहीं गिराएंगे. Friday, tomorrow, options expiring. Maybe drop tomorrow, last Friday of the month. But that may happen on November 1st because मैंने भाई लिए. फ्राइडे को यूजली चल रहा है, रीजन क्या है? मिक्स ही है, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरेशन हो रही होती हैं, तो ज़रा मतलब मीनिंग कुछ लोगों ने कहा होता है इस फ्राइडे को प्राइस ये हो जाएगी, अच्छा इस फ्राइडे को प्राइस तो यार दूसरी कह रहे थे इंडिया खाली चढ़ा तो इतना है. now it's consolidating in night session highs and lows. चलो ये आई. हो गया 600. छोटे छोटे 40-50 कर करके सर, मैं ज़्यादा भी बड़े देता था, वो फंसा देती है. $25 का चक्कर. नाइट सेशन टेस्ट हो गया. दूसरी दफ़ा हुआ है. 262. Come on, go to 200. मैं अभी दो भी ट्रेड ले रहा हूँ ना, 4 कंपनी 2 से बस 50 माइनस भी काटे थे वो, तब मेरा माइनस आ गया 576 से चल रहा है. मैं ऊपर वेट करने के लिए बट मैं इत्थों एक तकलीफ है, एक बड़ी मेरी आगे तो स्टार्ट करना चाहिए. ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡੈਰੀਅਨ ਸਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮੈਂ 50% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 99% ਮੈਂ ਤੇ मतलब वैसे मैं ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ मुझे कितने बार वहाँ से जा रहे थे, फिर बाई कर लिया जी वो और भी पढ़ते ले चले तो हम लोग तो सर ने चेक करना है इससे
ठीक है अभी तो चाहे प्रॉफिट होएगा चाहे लॉस डैमेजिंग करेगा आपको कुछ है लेवल एवरेज डाउन पोजीशन सबसे थले आजकल सेकंड लेवल एवरेज पता है उन्होंने पहले की लॉस बोल रहे हैं 375 बनाना है 3750 हो गए 10 दिन में चाहे नेक्स्ट एक दिन में बना दो सर नहीं 600 से ज़्यादा नहीं 600 से ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आइडिया अच्छा दिया 3750 करो ना उसके बाद रोज़ के 200 बनाना शुरू कर दो बस कम बना लो हाँ इनसे पैसे लेने हाँ हम विदेशी हैं कुछ निकाल लेंगे जुगाड़ बड़ी अच्छी नहीं एक डिफरेंट आइडिया दिया पहले ना $500 लूज कर लो कितना वो भी तो that's a little bit risky वो भी तो काउंट होता ही है वेरी क्रिएटिव एक्शन से लूज करने की आदत वेरी क्रिएटिव negative psychology that can also affect your mind. नहीं लेकिन आई गेस एंड ऑफ डे को देखते हैं दे वुडंट काउंट दैट या दे वुडंट काउंट That's true. बट वेरी क्रिएटिव आइडिया दो बिजली चोरी चला करनी काम अड्डे डेढ़ साल मेरा ये ना मेरा कल एरिया में मेरा दिन बहुत अच्छा गया था ईपेक्स में भी एफटी में भी तो आज एरिया नहीं आ रहा बैठा हूँ मेरे से गलती हुई मैंने यस कर दिया मिस कर दिया उसने 11 पॉइंट दिए तो मैं तब मेरा सारा फोकस नैस्डैक पे था फिर चलेगी जो ले गए जी वापस ऊपर लाएंगे बड़ा कीड़ा हो रहा है कि रोज का करेंगे पे आउट मिला वो उन्होंने अपने बहुत फायदे किए हो गया सर चीज हो गया अपना गोल इधर सर मैं कह रहा था मैम ने जो सजेशन दी वो एंड ऑफ डे देखते हैं तो दे वुडंट काउंट दैट लॉस बिकॉज वो तो एंड ऑफ डे देखते हैं ना अगर आपने 62 का लॉस करके अब आपने दूसरा का प्रॉफिट नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 50 का लॉस हो रहा है ना तो 12 और लॉस करो ट्रेडिंग डे काउंट कर दो अच्छा यानी वो डे ही खत्म कर हाँ उसको 10 दिन का काउंट कराओ ना उनको बस नहीं दैट एक्चुअली मेक्स लॉट ऑफ सेंस नहीं सर मेरे को जैसा लगता है 340-50 पे ले जाएंगे इसको तो जो रमेश आपने पहले कहा था ना $1 वाला वो एक्चुअली उन्होंने 187.50 कर दिया लॉस वाला हाँ तो उसको वो नहीं चाहते थे अपेरेंटली अब्यूज बहुत हुई है हाँ जी वो भी ठोकर खा खा के सीख रहे हैं कि अपना पैसा कैसे बचाएं भी बाइंग चल रही है सेलिंग जितनी है ना वो टेंशन में डाल दिया I think still Scott trades himself. He manages a hedge fund. So, लेकिन आपके because that's how you would make a income. I was offered 4 times. It costs about $2.5 million to open up a good funding company. Problem is you have to have rules that are designed for you guys to fail. Okay, so what is Apex biggest rule they have is that a trailing threshold. That will fail, and they only pay out that much, right? But they collect so much. Legends has rules, but moderate rule. FTT had no rules. And when you have a company with no rules, then what do you do? देखिए जी मारूफ जी ओवरबॉट हुआ, मिड बैंड टेस्ट हुआ, प्रीवियस हाई टेस्ट हो रहा है, वहाँ से सेल करना ज़्यादा सेफ होगा. There you go, previous break, but it's coming from an area, no problem, let it go. So, on the extension, you are not
No, because I'm looking at, The mid-band testing at that point. yes, but I'm watching the strength at the bottom. Yes. Came from 262. Now again, the higher it goes, the better. Higher the front and longer the fall. There you go, I shorted from there. क्लियर हाँ, मैंने दूसरी एक्सटेंशन के बाद 5 पॉइंट के लिए. So now again it's going up. It's okay, no problem. मैंने हर लॉन्ग किया मैंने शॉर्ट कर दिया काट दूं फिर 10 नहीं, लेके मैं शॉर्ट डिफ तरीके से कर रहा था. स्विंग, रिट्रेस, ब्रेक. सॉफ्टवेयर देखो सर ऊपर ही जा रहा है मैंने 10 लेके काट दिया अभी 25 हो गए नहीं, ठीक. ले गया उसने तो उसको ओवर देखो खींच गया ऊपर 5 से लिया था मैंने 8 पे निकल गया वही स्टक है So if it crosses this mid-band now again, you can short? No, I'm waiting. I'm still in the short Because from. it's still like that. I'm already in short from previous, but I couldn't close. And both sides is showing bullish and it's going back up again. Because 1 mid-band, 2 mid-band, 3 mid-bands. ऊपर चला जाए थैंक यू जी. No problem. Hey, take care. हो गया टारगेट नहीं कितना रहेगा ये 200 प्रॉफिट 313. So let's see. It's right at the pivot point. So 262. कोई नहीं झगड़ा मैं जाओ रोज हार के जाना ओके जी बाय. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਬ ਖੋਲ ਦਿਓ Life jacket. ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮਾਰਨੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਆ 10-15 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਕੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਏ 2:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 1-1.5 ਵਜੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ $40. Nasdaq. 721 ਬਣੇ 1000 ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ $250 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਾਏ नहीं, मैं ठीक. मैं सिर्फ टेस्ला देख रहा हूँ. टेस्ला बाय हो रही है. 320. टेस्ला. 340 ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ 340 ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 360 ਤੇ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਣਾ ਲਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਭਾਈ ਨੇ 500 ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂ 250 ਡਾਲਰ ਇਹ 500 ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ 500 ਸੀ ਫਿਰ 250 ਪਲੱਸ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 58. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ 30 ਏਰੀਆ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ $600 ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰੇਡਰ 41. S1. Let's see if it goes to S1. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਫਟੀਟੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇ ਕਰਨਾ 10 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਤੇ $50 264 back up to 50 ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ $600 ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 500 ਕੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹ different company ਜਿਹੜੇ 500 ਕੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ Can ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੋ ਏਰੀਆ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ $4 ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ commission नहीं ना लगता? 328. ਜਦੋਂ ਲੜਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਡਾਲਰ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ 5 ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜੇ ਥੋੜਾ
ਪਰ 5 ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁਣ FTD ਚ 7500 ਸਟਾਰਟ ਹੋਲਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਲਡ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਨ ਥੋੜੇ ਬਣਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਚ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲੋਸ 8-8000 ਵੀ ਲੋਸ ਕੱਟਿਆ ਵੱਡੇ ਚ। 41.29 ਕੱਲ ਕੱਟਿਆ $900, ਪਰਸੋਂ ਕੱਟਿਆ $900 ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 750 ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈ ਵੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ 500 ਦੇ निकालते स्विंग बहुत बड़ी हो गई। बहुत बड़ी swing हो गई। 60 But remember, look at Tesla has gone to 255, $42 almost. ਉਹ ਡਿਪ ਲੈ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕੰਮ। $71 की स्विंग है, बहुत बड़ी। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ अब 71 की बड़ी नहीं लग रही है। ਮੈਂ $600 ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਈ ਗੜੀ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। Tesla price 41.51. One day Tesla rose. ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲ ਗਏ ਸਰ? 32 ਪੁਆਇੰਟ। 40 ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਲਾਉਣ ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैं कहना इन्हीं मार्केट फैट चीज में कहना कि मूव नहीं करती, बड़ी यहाँ से मूव करने। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਫਾ ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚਾਹਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कोई तो सही है। ओके ओके फिर मिलते हैं कल। ये क्यों नहीं जा रही ज़्यादा? FTM नहीं लग रहा ज़्यादा मूव करती। 183 पे है। एवरेज सामने काफ़ी बनाती है सिस्टम। 115 तो चली है। 244. 71 पर रेजिस्टेंस है सर, 71.25 है। चल ना लो अच्छे। 50 की मूविंग एवरेज नहीं बढ़ती है, इन चल देंगे। उन्हें लगा दिया सर, छोड़ दिया। Yeah, still 42, 43. चलेगी 40 भी टप के 50। छोड़ जा और ले चटनी छोड़ लूंगी। 50 point this time. एंड मिडबैंड Midband test किया again. Back up. Yep. So if it crosses the 352, then you. Yeah, then I will think of shorting. It's 354 actually, I guess. Yeah, yeah. ये थोड़ी देर में चल जाएगी। Oh, I'm sorry, I'm in M&Q, so yours could be different. NASDAQ. With the regulation. Yep. It broke. Wait. Now you wait for the dip and then you. Now I will wait for. Okay. Again, testing. Because that was a gap trade. ये लगी है। It's like a mic check, नहीं, testing, नहीं, testing, नहीं, 1, 2, 3. जाए नहीं जाए. Back again. But I already gave you 5 points. Yeah, not If you're yet. after 5 points. देख लो। There you go. There you go. It's a better trade that way. आगे सर आगे। पर भी ये समझ नहीं है कि 54 के बाद 55 को एंटर हो जाना कि 60 के जाने का वेट करना। नहीं, वो तो वेट करता है. So overbought, mid-band weight, previous break higher high, and then let's see. This was a 20. There you go, broke previous highs too. ਹੁਣ ਪੈਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। वेट ही कर रहा ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਣਾ। मैं ना भी फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉस नहीं करता। मैं दसो भी की खत्म की हो सकती स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एरिया कर रहे हैं मैं प्राइस देख रहे हैं एरिया ते आएगी तो सेल कर रहे ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ?
नहीं है तो वैसे सर खुद करना ਪੈਣਾ ਇਦਾਂ ਜਿੰਨੇ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਖੇਲੋਗੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਖੇਲ ਰਹੇ हैं ਹਾਲਾਂਕਿ 20000 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਰ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਲੋਟ ਲੈ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ 5 ਲੈ ਲਓ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਿਨ ਆ ਗਈ ਹੈ 23 ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 44 ਆਲਮੋਸਟ S1 ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ सेल करता तो नंबर देख के मैं बस 5 माइक्रो लेने यार कोई देखो किन्ना करते $857 हो गया तो डेली का टारगेट है डेली का और कुछ भी नहीं सर क्योंकि जिन्ना ज़्यादा तुसी अग्रेसिव खेलोगे मार्केट जीतेगी तुसी नहीं हूँ देखो इन्ना तुसी उत्ते आ गए सी मैं तो खेलता ही माइक्रो है यार देखो हूँ देखो आ गया ना तुहाडे सामने लिया सी ना बन गए क्लोज करता ठीक है छोटे 874 हो गए हूँ अगला ट्रेड है ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना यार पे आउट आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वरना तुसी गिव अप कर जाओगे मार्केट नहीं गिव अप करेगी स्लो एंड स्टडी करना पड़ा नो प्रॉब्लम हाँ जी सेल किया था एनीबडी टुक ए सेल गुड Now everybody is going to take those profits and we're going to make money. Behind this sell, what was the rationale? Nothing. Just overbought. That can be नहीं overbought was the rationale. वही वाला है ना overbought कहीं से. So overbought was the rationale. Yes. 892 कितनी स्पीड से आई है. Overbought. ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 20 30 40 ਦਾ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਓਵਰਬਾਉਂਡ ਓਵਰਸੋਲਡ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ $50 ਦਾ माइक या बाय ना कीजिएगा नहीं सेल ही सर बाय नहीं कीजिएगा No, I shorted on that previous one and then and you made money right I made some. good congratulations so overbought wait for mid band break the previous high and then wait for extension अगर डाइवर्जन बनती है तो उसका भी अच्छा वही है ना कि मतलब 70 पॉइंट गई मिड बैंड टच किया फिर ऊपर चली गई नीचे देखेंगे स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई तो आपको चांसेस आपके ट्रेड के प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट के बढ़ गए even look at over down touch mid band once again break previous low give you 5 points but it's not a buy right now again that same magic works मैं कहा एक दिन सेल ले ली थी मंगल ने चल जाने के तो आ जाएगा मैंने आई तो सेल Tesla is up 20 full %. $42.
So what number I'm watching for? 356. So previous high. Or short? हाँ क्या उधर 356. 356 previous high. और सर बेहतरीन हो गया सर टेस्ला $42 यार एक दिन 20% of the stock in one day. That's ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 2023 ਚ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨੋਰਥ ਜਾਓ ਟੈਸਲਾ ਦੀ P100D ਜਿਹੜੀ highest sports car. Highest. Yes. 1,55,000 ਦੀ ਗੱਡੀ 27,000 ਚੱਲੀ 2021 ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $83,000 ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਬਰੂ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ HUV. ਨਾ ਉਹ ਪੈਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ 43,000 ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ no not 43,000 40,000 less than और मेरे कज़न है ना कोरोना टाइम में तस्ला 3 थी मेरे पास मेरे कज़न के पास जब साथ ही रहता था 82,000 दे रहे थे उसकी 2,000 डॉक्टर साहब नाम दे संदीप है कुछ वो तो दो नहीं और तस्ला हैगी है वाइट को वो मेरे नेबर ही है ना नहीं इन्हें को एक BMW और एक मैं तस्ला लगा ना पहली ਜਿਹੜੀ BMW थी ना वो दे के X5 ले आए या छोटी फुल इलेक्ट्रिक ले आए आप लास्ट वीक लेके आए ਤੇ ਉਹਦੀ 2100 ਕੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 1900 ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਇਆ हाँ लेकिन ये टेस्ला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 45,000 ਦਾ सर वो तो फ्री बन रहे ने मॉडल 3 कहते बस ले जाओ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਚ ਲਵਾਂ ਦਸੰਬਰ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ 95 ਦੀ 90 ਮੈਂ ਲਈ 70 ਦੀ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਚ ਮੇਜ 70 ਤੋਂ ਹੁਣ 65 ਦੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲੋਸ ਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ 58 ਤੇ ਦੇ ਗਏ ਸਰ X20 ਮਾਡਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 65,000 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਇਬ ਵਾਲੇ ਜਿਪ ਵਾਲੇ $3,000 ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 100% ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇ ਟੈਸਲਾ ਯਾ 100% ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਿਯਮ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਕੈਸ਼ ਬਾਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਮੈਂ 6 ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ 850 ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਲ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੱਡ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰਡ 4 ਸਾਲ ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਣਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਣਾ ਬਸ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲਿੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਮੈਂ 165 ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 270 ਦੇ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 280 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ L7 L6 ਕੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ L7 L7 ਮੇਰਾ L7 ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 49 ਮੇਰਾ पहुंच के ਹੈਗਾ वापस ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ L7 ਉਸੇ ਚ ਪੈ ਗਈ ਪੁਰਾਣੇ You're still paying for 356 only? Yeah, true, Harry. I was short. I took a bit of an overbought, oversold, and
पॉइंट सर 6 पॉइंट ऊपर है सर सेल 196, 156, आसपास ही घूमती है 196. पर ट्रेडिंग करानी है करा के थल्ले सुट के एक करी ऊपर करके 349 minus 40. हाँ हाँ बेची हुई है, मैंने तो है नहीं 348. मैं भी तो बैठा हाँ 18 ले गए मैं नहीं शाम में उसकी बात करूँगा. नाइट में देखो नहीं करते रात में सर रात को क्या करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इनकी मुझे तो लगता है जिसने टेस्ला का शेयर लिया बेचना भी तो है कुछ, नीचे गिरेंगी आपको लगता है जाना ही तो चाहिए. टेस्ला इज $42 up. फैमिली वाले जो ले लेते हैं ना वो नहीं फिश बेचते। वो लड़ा के रखते हैं इसको बस मैंने कहा ही आज टेस्ला मार्केट ज़्यादा करनी है everybody is watching Tesla here. Nasdaq. सैलरी की हम पे सैलरी लाइए बाय लाइए नीचे 40 साल लगाएंगे बाय पे तो लेट काट की 305 पे 8 पे निकलेंगे तो 60 लाख मैं थे तो कभी खर्चे में बैठ वो कर दिया That shot up quickly. Justin Trudeau ने आज बोला है we are bringing a strict rule for companies to prove why they can't hire Canadian workers fast. ये क्यों नहीं ले रहे? strict rule बना रहे Canadian workers. LMI खत्म हो गया. अलग अलग काफी $28 देते ना लोग किसी ले नहीं देते ना $28 देते तो लेकिन मैं भरा $28 बना लोग कैश हो ये बाहर ले एरिया में नहीं जीटीए में इधर इधर नहीं पता नहीं बाहर में सर सेल बनता है 500 टन 400 के बाद 400 नाइट सेशन आई मीन हाई तो जाए ना 428 के बाद देखूंगा. के बाद सेल बनता है या 400 के सेल? 400 के बाद नाइट सेशन हाई इज 428. यहीं से गिरा दी जो लास्ट हाफ है आवर की कैंडल थी ना वहाँ साहब, जो लास्ट हाफ आवर की कैंडल थी ना वो सिर्फ वीक टू वीक की रहेगी, अनडिसाइसिव थी बिल्कुल ही. अब सर सेल आ रही है इसमें बहुत बड़ी बॉक्स आ गया नहीं बॉक्स नहीं आया बस हम उधर में चटकाई बजा Because ES is 1510 is in a divergence because there's two highs, but look at the strength did not go up. Price went up, so that's a sign that it should bounce down. Let me look at 3020 ES. कहाँ से कहाँ ले गए Come on, come down now. Yes, enough has gone up. Keeps touching mid-band.
Only thing again pumping up is Tesla, $42.51. Come on, man. Oh, enough. Who's buying? $256. One night. $42.51. मैं तो 410 पे चल रहा हूँ। So let me see. पहले नेक्स्ट सेशन हाई टेस्ट पे नहीं कितना ले नहीं अभी उसी का वेट कर. लो टेस्ट कितना है? वहीं से करा दी अंदर जाने नहीं आ रहा Look, 1510 made a line on ES divert, but mid-band worked one more time. अब 360 से नीचे गिरेगी 360 से नीचे गिर जाएगी So 20,079 to 20,428. That's 349 points. If it's a 30% of that, is 104. So 20,440 minus 20,428 minus 104 should be around 325 पे होना चाहिए बंद. 325 is the end game maybe, because look, it's where I'm doing the math. Go long at 325. No, I mean like I'm just looking at today's session. You're doing like an average So from points. 2079, so the lowest point was 20,079, highest point is 20,442 in one day. So 20,428 minus 20,080 is 350. If it gives back a retrace down 30%, so that's 100 points approximately. So 350 maybe. Let's see, where do they want? येलो बॉक्स क्या होता है Yellow box is just कि वहाँ resistance बढ़ी है ना. रेजिस्टेंस है यहाँ Green and blue is support. So पर यहाँ से नीचे गिरेगी 350 मुझे मेरे को लगा 350 पे बंद होना चाहिए. Lowest 360 I think. Lowest 360. लोएस्ट नहीं कल रात का, क्योंकि आज की और कल की मूव मिला रहा हूँ ना. So lowest for yesterday was 20,080 and the highest for today is 20,000. So 30% होना चाहिए, यानी कि जो अभी तो आ गई है ना, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स आ चुकी है. 428 था ना आज का हाई और अभी चल रही है 360, तो 70 पॉइंट है. क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, अराउंड 4 बजे क्या होना चाहिए?
ਇਹ ਵੀ ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਲਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 o'clock and I gotta go. ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਈ 25 पॉइंट के लिए चाहिए Okay, guys, I gotta go. Thank you. See you guys tomorrow. Yes, Michelle. legend live that a time in past three deep in legend that you can see political मीना रखना मीना चीज है अल्लाह चीज है अल्लाह इधर काम छोटा 100-200 रुपये पेड़ आओ प्रोटीन मिनी माइक्रो मिनी माइक्रो छोटे बन गया 100 तो मन को लेजन शेयर करना डाटा करना है ना तो पैसे देना यार मैं ये नहीं 20 चीज़ अलग बात है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक अकाउंट मिलता है एक अलग अकाउंट मिलता है इतना नहीं सीखो अकाउंट तो लिखते सारा ध्यान रखते ही ना पूरा होया नहीं चाहिए जिन्ने ज़्यादा मांगा उन्ने ज़्यादा पैसे खाना होता है इतना नहीं ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करनी तुझे कर दे लेजन चाहिए आप $20 वापस दीजिए मैं अकाउंट है पैसे बनाऊँगा वो फीड को देखने में अपना वाला अकाउंट बनाओ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਕਿ ਫੀਡ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ $30 ਦੀ 50 ਦਾ ਲੈਜਨ ਲੈ ਲਈਏ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ हाँ जी. ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜੀ अगर एक दफ़ा पीए बन गया लाइफ टाइम फीड है. फीड तो हाँ फीड तो लाइफ टाइम है. फीड तो लाइफ टाइम लेजेंड ही ले लिए देखिए एपेक्स लें, लेजेंड लें, आप एक पास करके रख लें ना. आपने तो पास कर नहीं लिया था. सर फीस वन टाइम में बाद में फिर वो बाद में वही चक्कर नहीं, लेकिन ज़्यादा बना देना. मैं एफटीटी में लग गया अच्छा. नहीं वो फीड उसका बंद तो नहीं हुआ वो भी मेरे से ज़्यादा बन जाते हैं फिर वो एवरेज और बढ़ ज़्यादा बना लेंगे ना गोल्ड की कहना पिया गोल्ड कहना गोल्ड पे चले चरंजा से आया था. हमारे एरिया क्या था गोल्ड का आज? कहाँ से बाउंस होना? बंदी कर दिया है ये तो ऐसे मार्केट में माइंड रखने के लिए गोल्ड का एक्सपेक्टेड हाई था 2761 2765 था तो 54